and straight in GST audit, a scrutiny of financial statement, etc. in a webinar hosted by National Academy of Indirect Tax and Custom, Ministry of Finance, Government of India to train GST officers of Chhattisgarh. He is faculty in certification course on GST in Raipur, Chhattisgarh. He also handled litigation on service tax and GST along with our legal associates at Commissioner Appeals, CESTAT New Delhi and High Court of Chhattisgarh with a favorable outcome. He is mentor cloud based on GST academic database www.gstsamadhan.com. Great, sir. Subscribed by GST officials and GST practitioner across India. He authored 3 books on GST. First one is GST e-way bill, second one is GST TDS, and third is GST basics. Currently is serving as a chairman MCS and OTC committee and executive member of Raipur branch of CIRC of ICAI. Currently, he is serving as executive partner, Tattvam advisor, and SC Mahandru and Company, chartered accountant, looking after indirect tax assignment in the firm. He is also practicing in this field, indirect tax, from last 10 years. Great, sir. Thank you, Deepti, for giving me this opportunity. I just hand over the session to Vikas ji to continue the same. Thank you so much for the brief introduction, ma'am. Thank you, ma'am. Shall we go through our presentation? Yes. Okay. A very warm good evening to all the participants across from various cities and across India. Hope I am audible, ma'am. Please let me know if there is any issue with respect to voice. Sure. Sir, you are audible. Okay. Just I'm sharing my screen for a presentation. I think it's visible. Yes. Okay. Great. First of all, ma'am has Dipti ma'am, very thankful to GST Gyanstation, who is continuously organizing such educational events in the taxation and different topics which enlighten all the members. And we are thankful to see Dipti Jain for such initiative. And we are thankful all the viewers also who have joined this session. This will be a very interactive session and we'll try to resolve all your queries with respect to GST Council meeting. Lots of meeting is going on in GST Council, but most of them we don't hear any major changes. But this time we have put the topic 47 GST Council because it come with lots of changes. So we will be discussing what are the recommendations made by the GST Council, and then we will move forward to all the notification and circular issued by the CBIC to giving the effect of 47 GST Council meeting. So 47 GST जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारी जब अभी रिसेंट में कुछ मीटिंग्स और हुई थी GST काउंसिल की, but no one is aware because there is no major changes in GST, and all of the professionals and the industry thought that everything is settled now in GST and it will continue for next to 5 years, because we see that lots of notification, around 700 notifications, circulars issued in GST. So we thought that it is now stable, and the rest of the year there is no major changes apart from minor rate changes will be there. But this time 47 GST Council meeting, they have come out with all major changes considering the industry demand and the major hurdles which industry is facing. Apart from that, government also looking for new revenue opportunities to bring more taxpayer in the bracket, even to increase the collection, because there's lots of revenue collection pressure for the government also, even though they are collecting around 1.40 lakhs per month. Now our finance minister is targeting around 2 lakh per month, 2 lakh crore per month. So there's now introducing major FMCG goods industries also into this tax bracket at the rate of 5%. So now government is on the view that they have to broaden the of GST
and new taxpayer should be introduced, and all new revenue sources should be gathered for the government to have greater funds for the long term. Even we have heard that the time limit that is prescribed for the basically the states which are going to having losses due to GST implementation, they have to be compensated. But due to short collection during the corona period, the government is facing difficulty. Now they have extended the compensation time also to compensate all the states about the GST deficit they are facing due to introduction of GST. So now government have major changes in the 47 GST Council has recommended, and few of them have already implemented through notifications, and few clarifications also introduced, which shows the intention of the basically GST Council how they want to treat the various transactions which has an ambiguity in the industry. So with starting with some updates upon recommendation made by 47 GST Council meeting. Quickly we go through the recommendation. Later on we'll be discussing in length and breadth about the notification and circular having effect of implementing the 47 GST Council recommendations. Okay. First, the broadly these are the sectors which has been looked after by the 47 GST Council meeting, and this has been impacted by 47 GST Council meeting. We will be discussing one by one the major sectors and what are the major changes that has been proposed or recommended by this council. First, we go through the real estate sector. The major challenges which real estate sector is right now facing is the sale of developed plot. There's lots of ambiguity. इसमें हर states की advance ruling authorities पे different opinion था, and some are taxing this transaction. Now even the most of the states, the notices has been served by state GST and central GST department to tax this case, to remove the what are the ambiguities in the market and what are the ambiguities among the stakeholders. Government have come out with a clarification, and this has been recommended in the GST Council meeting, which says sale of developed plot. What is sale of developed plot? Basically a piece of land which is given certain basic facilities to make a house or property, the residential property there. It is called developed plot. So as we know, the Schedule 3 and Schedule 3 already exempt the supply of land, but developed plots somehow government officials are issuing notices to tax such the sale of supply of developed plots. Now they have removed this ambiguity with this clarification. What they say, there was ambiguity with respect to developed plots in a manner that whether it is a sale of land covered under Schedule 3 or a supply of construction service covered under Schedule 2. So most of the builders जो thought था उनका it is only a supply of land, so there should not be any tax liability. But the department is of the other view that this is not a normal plot, it is a developed plot with lots of amenities attached to it. So it must be put in the taxable bracket under the construction services. So to do these, remove these litigations, and a lot of litigation already going on this topic. So they have what they said: the sale of land after leveling down of drainage line, etc., is the sale of land and does not attract GST. So they say plot or a developed plot, it is all the same. It is only a supply of land, so there should not be any tax liability on it. So they have recommended this, and later on council will come out with the clarification also for this. So this is the major changes which real estate sector is basically looking after. Now they have come out with clarification. This is a welcome step, the council, which will be remove the dispute in the industry regarding the taxability of sale of developed plot by the developers. Also, detailed clarifications awarded in this regard to determine the specific implication arising out of this recommendation. Apart from the next, which is issue in this industry, is the preferential location charges towards long-term lease of plots. What is a preferential location charges? Generally, when we see कि कोई भी property है या land plots होते हैं, तो corner plots, wooded plots, garden facing plots, the builder generally charge, developer generally charge an extra price for that preferential location. So what is this covered under GST tax liability? So government, what they have said, what is the issue in this? At the time of granting long-term lease of plot, the leasee provide with the option to choose location of the plot in lieu of the preferential location charges. This was the ambiguity whether or not GST has to be paid on PLC charges, that is preferential location charges.
So the GST Council has recommended issuance of clarification such PLC is levied to GST as it form part of the consideration for long-term lease of land. For reference, the recommendation of the council has been reproduced here, that allowing choice of location of a plot is a part of supply of long-term lease of a plot of land. Therefore, location charge or preferential location charge are part of the consideration charge for long-term lease of land and shall get same treatment under GST. So जो भी treatment lease में जैसे flexibility आएगी तो same treatment उसको भी मिलेगा. There should not be a different treatment to this. तो जो भी land अगर land exempt category में आएगी तो वो भी exempt रहेगा, और lease का case है जहाँ taxability है तो वो भी taxability उसी bracket में आएगा. So pursuant to this clarification, it can be said that PLC collected towards the sale of under construction apartment shall form part of the construction service and hence eligible for 1/3 abatement. So real estate में हमको 1/3 abatement मिलता है for the land portion. So same treatment यहाँ पर देना है. तो इस clarification से ये होगा कि जो भी आपको preferential location charges है वहां पर भी you are also eligible for 1/3 abatement. We should look after it. Next, other recommendations in the construction sector are all fly ash brick attract some concessional rate irrespective of fly ash content. अब वो concession आपको मिलेगा. Stones covered in serial number 123 of Schedule 1, even if they are ready to use and polished in minor way, attract concessional rate of GST 5%. The condition of 90% fly ash content with respect to fly ash brick apply only to fly ash aggregate and no fly ash bricks. As a simplification measure, the condition of 90% content is being omitted. So they have removed the ambiguity कि जो fly ash bricks बन रहे हैं उसमें जो fly ash का content है उसके हिसाब से वो rate define होता था. Now they have removed this and omitted this content 90% content element. Now they say all the rate will be 5% the flat rate which is applicable on the bricks. Now moving on to the next sector, which is the recommendation for GST Council and works contract service. Now in this sector, previously also in previous meetings, government has changed the rates of the works contract and put it in 18% when it covers the government entity and government authority. Now further, they have come out with major changes in this sector also, and they have almost covered all the aspects and increased the rates thereof. First, they have covered in this meeting that the works contract for roads, bridges, railway, metro, effluent treatment plant, sanitation, etc. It is right now it's taxable at the rate of 12%. Now they have recommended 18% GST rate for it. Work contract supplied to central government, state government, local authority for historical monuments. This is previously taxable at the rate of 12%. Now they have made it parallel to 18% only. Work contract supplied to central government, state government, where a predominant earthwork is involved. That is majorly जो उसका portion रहता है वो earthwork का होता है. तो previously it is 5% taxable. Now they have made it 12%. So this is the major changes which has been taken in works contract service. Now की overall अपन ये देखेंगे तो all the construction activities put in 18%. Only जहाँ पर predominantly earthwork है. Earthwork basically कहाँ जहाँ पर ये land की leveling over करना है, जहाँ major material element involved नहीं होता है, only labor portion is involved. So वहाँ पर वो 75% से अर्थ ज्यादा अगर मटेरियल इनकम होता है और अर्थ वर्क इन्वॉल्व होता है तो उस केस में 5% का कंसेशनल रेट था. नाउ दे हैव इंक्रीज दिस रेट बाय 7% एंड पुट इन 12% ब्रैकेट. सो मेजर रेवेन्यू हैज बीन increased with this sector and major challenges in this sector will be कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हमको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं जहां पर हम लोग ने टेंडर पार्टिसिपेट करके 12% के हिसाब से पार्टिसिपेट किया था. नाउ दे हैव इंक्रीज 18%. हाउ विल द इंडस्ट्री एंड द पार्टिसिपेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो 6% का जो बर्डन है वो कैसे बियर करेंगे, और वेदर द कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट विल रीइंबर्स टू देम. इट विल बी अ मेजर चैलेंज इन द टाइम अहेड. Next sector is the logistic and transportation sector. These few changes in this sector are exemption on transport of passenger by air and from northeast states and Bagdora is being restricted to an economy class. Transportation by rail or vessel, railway equipment and material. तो जो इस सब में जो exemptions थे अब गवर्नमेंट ने उस exemptions को रिमूव कर दिया. तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या कहना है कि यहाँ पर जो भी ये exemptions थे अब no longer continue and or you will be covered in taxable criteria. So this fragmentation in a warehouse of agriculture produce, storage of warehousing of the commodity which attract tax. Previously all the warehousing में बहुत सारे already exemptions थे.
Now they have said कि if commodity is taxable which you are storing, now warehousing charges will also be come under tax bracket. Transportation of goods passenger by roadways. Previously, it was taxable with 18%. Now they have come out with new rate recommended 5% with ITC of services only. Renting of truck goods carriage where cost of fuel is included. Previously, it is taxable rate of 18%. Now it will be taxable rate at 12%. These all rates will be effective from 18th July 2022, subject to notification issued thereof. Next. Transit to cargo to Nepal and Bhutan services associated with transit cargo both to from and to and from Nepal and Bhutan are covered by exemption under this notification. Now they have इसमें जो clarification किया कि ये भी exemption की category में cover होगा. Meaning of public transport. As per exemption notification, transportation of passenger by public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between place located in India is exempt from GST. However, the expression public transport was not defined. Now they have come out with the definition of public transport means that such transport should be open to public for point-to-point transport. It is such transport in Andaman, Nicobar, etc. So now they have defined the public transport meaning also. Further, the GST Council has recommended as under that goods transport agency is being given option to pay GST at either 5% or 12% under forward charge and 5% of the reverse charge. Option to be exercised at the beginning of the financial year, RCM option to continue. तो यहाँ पर जो ये option जो होगा, it should be opted at the beginning of the financial year. तो यहाँ पर दो बेसिकली यहाँ पर दो ऑप्शन थे कि 5% विदाउट आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी. सो दिस ऑप्शन विल बी कंटिन्यू. तो यहाँ पर बस एक ही जो चेंजेस हुआ है यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है, ये इंडस्ट्री की जो एक इशू था कि रिवर्स चार्ज में बेसिकली जीटीएस सर्विसेज कवर्ड होती है. नॉट दे हैव व्हाट दे हैव रिकमेंडेड दैट फॉरवर्ड चार्ज में भी आप 5% या 12% पे कर सकते हैं. दैट इज 5% विदाउट आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी ऑफ ऑल द ट्रक्स जो आप परचेज करते हैं उसको इनपुट को ले सकते हैं. और सेकंड जो आरसीएम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी कंटिन्यू रहेगा. So, but this option has to be available at the beginning of the financial year, and you cannot change during the financial year. So the industry, what we of the view, the industry was under impression that forward charge mechanism can be opted anytime during the year, and once the option to pay tax and the forward charge has been exercised, then the option for reverse charge cannot be availed again. Now the council has recommended issuance of clarification that opting of RCM or forward charge mechanism by a GTA. However, the implication of on account of this recommendation cannot be ascertained from the verbatim of the recommendation, and therefore, as we have to wait the requisite clarification how they will operationalize it and implement this recommendation. Now, e-commerce operator. Waiver for mandatory registration for suppliers supplying through e-commerce operator. जो एक मेजर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी थी जहां पर ये प्रिस्क्राइब था कि जहां पर भी हम ई कॉमर्स ऑपरेटर से रजिस्टर करते हैं तो यू हैव टू कंपलसरी टेक द रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट. नाउ व्हाट दे हैव सेड कि जो जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है 40 लाख फॉर गुड्स 20 लाख फॉर द सर्विसेज, और वो कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या सप्लाई करते हैं और दैट इज इंटर स्टेट टैक्स, तो इंटर स्टेट ओनली, इट इज लोकल ओनली, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. प्रीवियसली इट वाज कंपलसरी रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई इज नॉट मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई सप्लाई, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है देयर शुड नॉट बी एनी इंटर स्टेट सप्लाई. तो इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी आप सप्लाई करते हैं एंड योर टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख और 20 लाख द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट for taking the registration, then also you are eligible for the exemption of this registration availment limit. तो यहाँ पर भी आपको जो 40 लाख का जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है वहां पर आप अवेल कर सकते हैं. प्रीवियसली आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं. सो इट विल बी अ मेजर रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स जहां पर 40 लाख से कम उनका टर्नओवर होता है. तो बिकॉज कई बार होता है कि कुछ रिटेलर्स भी लोकल में सप्लाई करते हैं तो वहां पर भी उनका 40 लाख क्रॉस नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप अगर डील करते हैं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की, तो दे आर बेसिकली पुश्ड फॉर द कंप्लायंस
जो उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन किया कि नाउ फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई ओनली देयर इज नो रिक्वायरमेंट, एंड द बेसिक जो लिमिट है आपकी वो 40 लाख की, और थ्रेशोल्ड लिमिट वो आपको अभी भी मिलेगी। बस इसमें इसमें एक कंडीशन रहेगी, यू शुड नॉट एंटर इनटू एनी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई आपको नहीं करना है। कंपोजिशन टैक्सपेयर विल बी अलाउड टू मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेशन, और कंपोजिशन टैक्सपेयर को भी अलाउ कर दिया। तो कंपोजिशन टैक्सपेयर के लिए भी तो ये इशू था। तो एज पर सेक्शन 10 of GST Act, that composition dealers are not allowed to make interstate supply. Further, such dealers are not allowed to make supply through e-commerce operator. तो प्रीवियसली यहाँ पर था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप नहीं डील सकते। नाउ द जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अलाउ द इंट्रास्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टू कंपोजिशन डीलर आल्सो। तब इसको the detail of the scheme will be worked out by law committee of the council. It is under recommendation state. It will be studied how it should be implemented. So it is most likely to be implemented with effect from 1/1/2023. FMCG sector. Few clarifications with respect to FMCG sector. First is for ice cream parlors. So what is the clarification given with respect to ice cream parlors? That with respect to taxability of ice cream sold by the ice cream parlors, GST Council has made a following recommendation. What is this? Due to ambiguity in the GST rate on the supply of ice cream by the ice cream parlor, GST charge rate of 5% without ITC on the same during the period of 1/7/17 to 5/10/2021 shall be regularized to avoid unnecessary litigation. So गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर कोई भी हम लिटिगेशन इनिशिएट नहीं करेंगे। किसी जो कंफ्यूजन से कारण इंडस्ट्री ने 5% पे जीएसटी चार्ज किया, तो कोई भी इनिशिएट इसमें इशू नहीं रेज करेंगे, और ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव टू चार्ज 18%. So in the 45th GST Council meeting, it has been recommended that tax sale of ice cream by the ice cream parlor is the rate of 18%, and pursuant to this recommendation, the requisite circular was issued. Prior to this recommendation, the industry was charging on the supply at the rate of 5%, considering it as a restaurant services. By virtue of this recommendation, the tax rate of 5% charged by the industry has been regularized in order to avoid unnecessary litigation. तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो एम्बिग्यूटी थी इंडस्ट्री में, जहां पर ये 5% चार्ज कर रहे थे, विच इज द सप्लाई आइसक्रीम सप्लाई के जो रेट पे 5% था, नाउ दे सेड दैट देयर इज नो लिटिगेशन शुड बी इनिशिएटेड फॉर दैट पीरियड, and now after the 45th GST Council meeting, 18% will continue thereafter. Withdrawal of exemption of specified food items grain in the terms of Legal Metrology Act. The Sorry to interrupt, Vikas ji, your voice is breaking. Vikas ji, your voice is breaking. Hello, now ma'am, please check. Yeah, your voice was breaking actually. Yeah. Okay. Yeah, you can continue. Yeah, you can switch off the camera because it's showing low bit. Yeah, please continue. Hello. Yeah. Okay. Hello. Yes. Now it's okay, More ma'am? clear. It's more clear now. It's more clear. Okay, sure. So now FMCG sector में जो issue था लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से उसको लिंक किया गया, and we will discuss in the detail after the basically notification also issued with 2 days back only. We will discuss in the next presentation, where we will be discussing all the notification and circular issued to implement the recommendation of the 47th GST Council meeting. So briefly, we will discuss that exemption in relation to non-branded food items, grain, dal, etc., was availed to taxpayer if it is have been registered brand name, or its right to brand has been foregone. Now, the GST Council has recommended to curtail the coverage of exemption by way of excluding from it pre-packed and pre-labeled. It is a major dispute going throughout the country. That is, what is a pre-labeled and pre-packed commodity? Retail pack in the terms of legal methodology, including a pre-packed, pre-labeled curd, lassi, and buttermilk. As per the said Legal Metrology Act, what the pre-packed commodity means, commodity which is placed in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contained therein has a predetermined quantity. Further, label means any written, marked, stamped, printed, graphic material affixed to appearing upon any pre-packaged commodity. First, I have to discuss what is the issue involved in this. बेसिकली क्या था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटीज है जहां पर ब्रांडेड पे टैक्सेबिलिटी थी से 5%,
And if it is a non-branded, you have withdrawn the foregone the trademark, then you are not liable to tax at the rate of 5%. We have the practical case laws. For example, we have the one famous basically poha manufacturer here. What they used to charge 5%, they have a trademark in the name, one name. They have a trademark registered with this, and he's charging 5% GST. But there are the other competitors, because of they are not having a registered trademark, they are not charging is 5%. So इस केस में क्या हो रहा था, इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, जो लैंडिंग कॉस्ट था कस्टमर को, वो हायर था. तो इट इज फेसिंग चैलेंजेस. नाउ लेटर ऑन ही हैज विथड्रॉन दिस बेसिकली ब्रांड नेम. सो गवर्नमेंट के पास ये रिकमेंडेशन, ये जो इंडस्ट्री का फीडबैक गया कि इट इज डिस्करेजिंग द ब्रांड्स, क्योंकि बिकॉज ब्रांड्स इज बिल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द रिक्विजिट क्वालिटी. तो हम क्वालिटी ओवर को ध्यान में रखते हुए कोई ब्रांड एस्टैब्लिश होता है. नाउ बिकॉज कि आपने क्या किया कि जो ब्रांड में बेच रहा है उसको महंगा कर दिया, और जो ब्रांड में नहीं बेच रहा है उसको सस्ता कर दिया. तो इट इज अ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड, और लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं था. तो लोग क्या कर रहे थे कि जो ब्रांड थे उसको डीरजिस्टर कर रहे थे और फॉरगॉन कर रहे थे. तो उस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट हैज ब्रिंग दैट कोई भी, इवन दो द व्हाट इज द लेबल यू यूज, whether it is registered trademark or not, now it will be taxable provided it is covered in the pre-packed and pre-label as per the legal methodology act. It will discuss what is detail, what is the meaning of this pre-packed and pre-label detail pack. Clarification on the GST rate. So it is called a green belt fiber is covered the entry 24B notification this dated this. The exemption that this entry is being rationalized. GST rate on all forms of mango under CTS 0804, including a mango pulp, and attract GST rate of 12%. Entry is also being amended to make this amply clear. Raw or fresh mango continue to be exempt. Now health sector, one major changes in this health sector. Generally GST health sector से कोई भी tax liability generally कोई भी tax collection होता नहीं है, क्योंकि it is lots of इस सेक्टर को हमेशा अलग रखा जाता है, तो नॉट टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. बेसिकली कोई हेल्थ इश्यूज के ट्रीटमेंट जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज ना किया जाए करके सेक्टर को छोड़ा जाता है. लेकिन नाउ गवर्नमेंट हैज टच दिस सेक्टर आल्सो एंड ब्रिंग इट टू ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू द पर्व्यू ऑफ जीएसटी. व्हाट दे से, services provided by the cord blood bank by way of presentation of stem cell, the exemptions discontinue. Like common biomedical waste treatment facility for treatment and disposal of biomedical waste shall be taxed at 12% so as to allow them ITC. 12% की tax liability होगी. And the major changes what is there, room rent excluding the ICU unit exceeding rupees 5,000 per day per day per patient charged by a hospital shall be taxed to the extent of amount charged for the room at 5% without ITC. तो दिस विल बी अ मेजर चैलेंज नाउ कि उन्होंने कहा कि आईसीयू रूम के अलावा अगर कोई भी हॉस्पिटल में पर बेड पर पेशेंट का जो रूम का चार्जेस है वो अगर 5,000 पर डे से एक्सीड करता है तो दे विल बी लाइविंग जीएसटी एट 5%. बट इट इज बेसिकली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई. देखिए बिकॉज कंपोजिट सप्लाई में ये था कि फॉर एग्जांपल दिस इज बेसिकली हेल्थ फैसिलिटी व्हिच इज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी बिकॉज रूम रेंट इज अ पार्ट इज अ पैकेज. जनरली क्या होता है कि जब भी कोई एडमिट होता है किसी भी इंजरी के कारण, कोई ट्रीटमेंट के कारण, तो वो एक पैकेज ऑफर करते हैं कि दिस इज द ट्रीटमेंट, दिस इज द एंटायर कॉस्ट इंक्लूडिंग द रूम रेंट. So because what we are availing is the basically health services. So health services is already exempt. Now they have basically created a new dispute in this sector that they said कि room rent will be taxable if charges are 5,000 per day exceeding 5,000 per day per patient. So it will be against the concept of composite supply definitely. And later on maybe challenged before various high courts. Lots of dispute soon will be arising on this topic. Clarification in relation to GST rate. Services of in form of the assisted reproductive technology in vitro fertilization are covered under the definition of healthcare services for the purpose of exemption under GST. Sewage treated water is exempted from GST is not the same as purified water provided. The word purified is being omitted to make this amply clear. बेसिकली जो फॉर्मूला था वीकेसी फूड स्टेप्स का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ऑलरेडी कि जहां पर ये क्लैरिफिकेशन आया कि भाई वो जो रिफंड आपको इनपुट सर्विसेज का तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें एक क्लैरिफिकेशन ये भी आया था कि आपको जो फॉर्मूला है उसको बेसिकली और अमेंड करना पड़ेगा. उसके रेफरेंस में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया, तो वी विल डिस्कस देयर.
और अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस रेट चेंजेस हैज बीन डन। अब यहाँ पर जो इशू था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पर इनपुट का जो रेट है वो हायर है एज कम्पेयर टू आउटपुट। तो उस केसेस में जो आईटीसी है वो एक्यूमुलेट होता है एंड द गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट दे हैव डन टू रिमूव दिस एनोमली कि अब उनको रिफंड ना करना पड़े, तो व्हाट दे हैव डन, तो इनपुट का जो रेट है वो तो हायर साइड में था, आउटपुट को भी रेस कर दिया। सो देयर विल बी लेस चांसेस टू दैट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर विल फॉल। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के पूरे कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने हटा दिया। तो अब वो कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं आएगा। तो दिस इज बेसिकली रिमूव नाउ। तो ये यहाँ पर ये गवर्नमेंट रेशनलाइज करने के लिए कॉस्ट को इंप्रूव कर दी। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट हैज अदर व्यू दैट दे हैव सेड दैट दे हैव इंक्रीज द आउटपुट रेट। नाउ देयर विल बी नो एनोमली दैट टैक्सेबिलिटी, बेसिकली यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा। अब जो भी अगर ट्रांजेक्शन होगा, अब यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है, तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी है वो होगा ही नहीं, क्योंकि इन जो आउटपुट का रेट है उसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। तो कुछ सेक्टर्स में जहां पर जो रिफंड इश्यूज हो रहे थे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, तो गवर्नमेंट ने उसको रेट को रैशनलाइज कर दिया। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं। वी विल बी वेटिंग फॉर नोटिफिकेशंस आल्सो फॉर गिविंग दिस इफेक्ट। एक और मैकेनिज्म था, इशू था कि रिक्रेडिट ऑफ आईटीसी आफ्टर रिकॉग्निशन, कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिल गया है किसी भी स्कीम में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या एक्सपोर्ट के केसेस में, और वहां पर कुछ एरर हुआ है, उससे कारण रिक्रेडिट करना है आपको। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने नोटिस रिसीव हुई और ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो आपका रिफंड था वो एरर था, तो आपको उसको गवर्नमेंट को ऑलरेडी रिफंड करना पड़ा ना। हाउ टू रिक्रेडिट दिस आईटीसी इन योर क्रेडिट लेजर, तो उसको करने के लिए ये इशू था। तो गवर्नमेंट ने एक PMT 03A का फॉर्म इशू प्रिस्क्राइब किया है, जहाँ टैक्स अथॉरिटी खुद इसको यूज करके आपको रिक्रेडिट कर देगी उस आईटीसी का। क्योंकि जीएसटीआर 3B में अगर इसको लेते हैं, तो जो मेजर इश्यूज था कि जीएसटीआर 2A और 2B वर्सेस 3B का जो डिफरेंस था वो आता और नोटिस सर्व करते, तो उस इशू को ना होने का रेज ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक सेपरेट फॉर्म प्रिस्क्राइब कर दिया, यहाँ टैक्स ऑफिशियल आपको रिक्रेडिट कर देंगे। Later on, we will say how GSTN portal will implement this scheme. It is Form PMT 03A. और apart from the refund of account of export of electricity, ये एक नया सेक्टर था कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपोर्ट होती है उसमें जो रिफंड है उसके रिगार्डिंग था क्लैरिफिकेशन आया है। मोस्ट ऑफ अस नॉट बी डीलिंग इन दिस सेक्टर, वी विल नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस सेक्टर। एक्सपीडिएंट रिफंड क्लेम ऑफ द रिस्की एक्सपोर्टर, तो गवर्नमेंट को जो इशू था कि जहाँ रिस्की एक्सपोर्टर है जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं बोगस बिलिंग के केसेस में या कुछ गलत एक्टिविटीज इन्वॉल्व करके, उसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल्स लाए हैं। उसके अलावा टाइम लिमिट फॉर रिफंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पीरियड 1/3/2022 28/2/2022। तो बेसिकली जो रिफंड क्लेम का टाइम लिमिट था जो कोरोना का टाइम था बेसिकली, तो 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक के गवर्नमेंट ने जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ पेमेंट से 2 साल का टाइम लिमिट रहता है रिफंड क्लेम करने के लिए, नाउ दिस पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड। दे हैव कवर्ड द। उसके अलावा लास्ट जो है रिफंड बेनिफिट और ड्यूटी फ्री शॉप्स। तो यहाँ पर जो इशू था अर्लियर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ड्यूटी फ्री शॉप्स जो बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में रहते हैं टू आउटगोइंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स वाज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर जो सप्लाई गुड्स बाय ड्यूटी फ्री यहाँ कवर नहीं था। नाउ इन अ बिड टू ग्रांट रिफंड बेनिफिट टू सच डीएफएस कि उनको रिफंड मिला जाए और इसको एक्सपोर्ट की कैटेगरी में ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड रूल 95A वर इंट्रोड्यूस। Recommendation of the GST Council is that now the GST Council has recommended that supply from duty-free shops at international terminal to outgoing international passengers are to be treated as export and by DFS. This is okay, basically duty-free shops and consequential refund benefit to be available to them such supply. So after the carrying out the requisite amendment based on the recommendation Rule 95A of the CGST rules, circular this dated 29/6/2019 and related notification shall be rescinded accordingly. Apart from that, they have changed with certain changes in the basically form also. Now, first of all is the waiver of the late fees for composition dealer. तो जो एनुअल रिटर्न फाइल करना रहता है कंपोजिशन डीलर को, इट हैज बीन प्रपोज्ड टू एक्सटेंड द वेवर ऑफ लेट फीस
for the financial year 21-22. Previously it was extended to by approximately 4 weeks, उसको extend कर देंगे, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी इसमें ला लिया. तो एग्जिस्टिंग पेपर इज फॉर द पीरियड ऑफ 1/5/2022 till 36 मतलब 30 जून 2022 तक था. अब गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया. वी विल डिस्कस द नोटिफिकेशन आल्सो. एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग CMP 08 आल्सो. तो GSTR 4 के अलावा जो 0 फॉर्म GST CMP 08 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 22-23 का जो पहला क्वार्टर है 18/7 से लेके इसको 31/7/2022 तक के इंक्रीज है. तो गवर्नमेंट ने इसको भी जो क्वार्टरली हम रिटर्न फाइल करते हैं कंपोजिशन डिलीवर के, उसके भी बेसिकली एक्सटेंशन दे दिया ड्यू डेट पे. The council has asked the GSTN to expeditiously resolve the issue of negative balance in the electronic cash ledger that is being faced by some of the comprehensive composition taxpayers. तो अगर नेगेटिव कैश बैलेंस का जो इशू आ रहा था, तो उसको फेस करने के लिए जो कंपोजिशन डीलर को फेस कर रहे थे उसको, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ने GSTN बोर्ड को बेसिकली सजेस्ट किया है कि कैसे इस एनोमली को रिमूव किया जाए. Proposal to suggest changes in GSTR 3B. Normally, what the returns the regular taxpayer is filing is GSTR 1 and GSTR 3B. GSTR 1 can be amended in the later period. तो GSTR 1 में जो भी amendment करना है हम बात next periods में कर सकते हैं. Now they have suggested that GSTR 3B में भी amendment किया जा सकता है कि GSTR 3B में भी अगर कोई mistake error हो गया है तो they shall be corrected in order to comprehensively change the form GSTR 3B and to resolve various issues faced by stakeholders. GST Council proposed to take input suggestions of the stakeholder by placing this proposal in the public domain. तो GSTR 3B में गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि कैसे इसको एडिटेबल बनाया जाए और जो भी एरर आपने प्रीवियस GSTR 3B में कर दिया है उसको करेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाए. तो they will be taking feedback from the public at large and all the taxpayers so that they can make appropriate changes in GSTR 3B form. Further now, right now basically तो GST पेमेंट हम करते हैं बेसिकली वो ओवर द काउंटर होता है या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होता है. Now they have expanded this scope. Now UPI, which is lot more popular right now. Yeah, everyone has a UPI facility. Most of the cases what we see that client के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं रहता किसी कारण से, तो बेसिकली टैक्स जो उसके कंसल्टेंट्स है they have to pay on behalf of their client. Now the government has expanded this facility that UPI or immediate payment system will also be introduced for payment of taxes. Sale of duty credit scripts not to be considered for ITC reversal. This is not most relevant. Now, basically, the relevant portion is that exemption for filing the annual return in form GSTR 9 and 9A for financial year 21-22 to be provided to taxpayer having aggregate turnover up to rupees 2 crore. So GSTR 9 और 9A बेसिकली कंपोजिशन और रेगुलर टैक्स पेयर को जो रिक्वायरमेंट थी, तो 2 करोड़ से नीचे वालों को अभी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. Few clarification has been given for the GST rate. Now we will quickly go through the notification circular issued for this. I'm sharing my next presentation on the circular basically. Is this visible now? Yes, yes, it is visible. Your screen Okay. is visible. You can share the it is next presentation. Sorry. The screen is showing. Thank you. You were talking about the next presentation, circulars. Okay. Basically, yeah. Now check. Yes, yes, Vikasji, it is visible. Okay. Notifications and circulars. Okay. So now let's see what are the notifications and the circular issued by the GST Council, basically GST, CBIC, Central Board of Indirect and Customs, to implement the 47 GST Council recommendations. So till now, there's lots of notification, and as we discussed that जो भी recommendations थी, it will be implemented with effect from 18/7/2022. So 18 जुलाई से वो लागू होंगे. So now we will be saying that what are the clarification circulars
and what are the notification issued. जनरली ये माना जाता है कि जब भी सीबीआईसी कोई क्लैरिफिकेशन इशू करती है, it creates more confusion on the industry also. So we will discussing what are the confusions which also arising due to this clarification issued by CBIC. So let's go through. First, let's discuss a few notification apart. We will discussing the notification other than date notification, and like the last part, the date notification which was recently issued. We will be discussing only the crux part of that. So what are the notifications basically issued? First, we will discussing what are the matter contained in this notification. First notification is 9/2022, central tax dated 5/7/2022. It is necessary amendments are made to transfer ECL, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो बैलेंस था उसको ट्रांसफर करने के लिए जो इशू था कि अब नाउ बेसिकली क्या है कि एक ही पैन नंबर पे अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, मल्टीपल स्टेट्स में है, तो उसकी जो बेसिकली जो प्रीवियसली रिकमेंडेशन था कि वो प्रीवियस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि उसको ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म दिया जाए कि अगर एक पैन नंबर में मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो कैश लेजर में जो पैसा है उसको ट्रांसफर करने की परमिशन दिया जाए. तो नाउ दे हैव इम्प्लीमेंटेड एंड मेड द इफेक्टिव डेट ऑल्सो. Interest applicability on wrongly availed and utilized ITC has been made effective retrospectively. So यहाँ पर भी एक क्लैरिफिकेशन कर दिया. उसके अलावा नोटिफिकेशन 10 जो 2022 है, जो 5/7/2022 सेम डेट पे इशू हुआ है, उसने क्लैरिफाई किया, उसने किया कि टैक्स पेयर हैज हैविंग टर्नओवर अप टू 2 crore आर exempted for filing GSTR 9 compliance schedules. तो यहाँ पर बेसिकली GSTR 9 की जो फाइलिंग थी उसको एग्जाम कर दिया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर बेसिकली करंट 21-22 ऑल्सो. तो नोटिफिकेशन 11 जो है टाइम लिमिट एक्सटेंडेड फॉर फाइलिंग CMP 08 जो क्वार्टरली रिटर्न बेसिकली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं कंपोजिशन डीलर. GSTR 4 जो कंपोजिशन डीलर एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं उसकी टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया. उसके अलावा टाइम लिमिट एक्सटेंडेड फॉर इशूइंग द शो कॉज नोटिस एंड ऑर्डर. तो 73 में ऑर्डर पास करते हैं और जो शो कॉज नोटिस इशू करते हैं उसकी टाइम लिमिट को भी एक्सटेंड कर दिया गया. और लिमिटेशन पीरियड एक्सक्लूडेड फॉर रिफंड, अगर रिफंड भी जो अप्लाई करते हैं उसके जो लिमिटेशन पीरियड का उसको भी कुछ पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया गया. वी कैन से दैट कोरोना पीरियड जहां पर इफेक्टेड था उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया गया फॉर दिस टाइम लिमिट. इवन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी अभी एरर रिफंड इशू कर दिया है तो उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया, उसके भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया विद दिस डेडलाइन 1/3/2022 से 28 फरवरी 2022 तक ये टाइम लिमिट को रिमूव कर दिया. Notification 14, various amendments are made to CGST rule to make the GST Council recommendation effectively. So these are the basically a summary of the notification issued. Apart from that, recently before on the basically previously 2 days only they have issued certain rate notification also, and major concern is there is the pre-packed and labeled. We will be discussing at the end of this session. Now so let's discuss what are the notification basically issued. So let's discuss one by one. First notification is 9/2022, central tax, transfer of balance from electronic cash ledger to another registration of same PAN number. First of all, this transfer can be done that for example किसी कोई कंपनी है जिसके पैन नंबर पे मल्टीपल स्टेट्स में बेसिकली ऑफिसेज है या एक स्टेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए उन्होंने और मल्टीपल स्टेट्स में भी रजिस्ट्रेशन लिए, तो नाउ दे कैन इजीली ट्रांसफर द कैश बैलेंस अवेलेबल इन देयर पोर्टल provided they have a same common PAN number. So section 49(10) was substituted by the Finance Act 2022, whereby the facility to transfer any balance lying in the electronic cash ledger of registration or in the electronic cash ledger of a registered person to electronic cash ledger of another registration of the taxpayer having same PAN was provided from the date to be notified. Now they have notified the date that by notification 9/2022, the above provision is made effective from 5th July 2022. So this is the effective date जहाँ से implement हो जाएगा. Now you can easily transfer the cash ledger balance from one all the registration across single PAN number. Now the registration person can transfer any amount lying in the electronic cash ledger to the electric cash ledger of its another registration, but in the form of CGST and IGST only. अब ये क्या इशू है, बेसिकली क्या है कि जो अभी जो नोटिफिकेशन ये इशू हुआ है वो सीजीएसटी की तरफ से इशू हुआ है. तो सीजीएसटी का जो अगर बैलेंस कैश लेजर में है तो इट कैन बी ट्रांसफर टू सीजीएसटी ऑफ अदर रजिस्ट्रेशन ओनली ऑफ सेम पैन और आईजीएसटी नॉट एसजीएसटी. तो क्रॉस आपको ट्रांसफर करने नहीं मिल जाएगा. तो जो सीजीएसटी में बैलेंस है इट कैन बी ट्रांसफर टू सीजीएसटी और आईजीएसटी. और सिमिलरली ये एक्सपेक्टेड है कि जो स्टेट जीएसटी नोटिफिकेशन इशू करेंगे दे कैन ऑल्सो अलाउड
transfer of SGST balance to another SGST or IGST. The facilitating the above transfer a consequential amendment to made in form PMT 09, जो अभी हम लोग यूज करते हैं PMT 09, बस ये था कि अभी हम सेम रजिस्ट्रेशन में ही ट्रांसफर कर पाते थे, नाउ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में भी जो पैन नंबर पे है उस पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं. Such transfer is not allowed if any unpaid liability exists in electronic liability register for the transfer. तो जो ट्रांसफर कर रहा है अगर उसकी कोई अनपेड लाइबिलिटी है, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जो बनता है उसमें कोई भी लाइबिलिटी पेंडिंग है, तो उस केसेस में ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज. बेसिकली यहाँ पर जो इश्यू था कि अगर मैंने अवेल कर लिया आईटीसी, तो आई विल बी लेवेबल टू इंटरेस्ट और नॉट. So yeah, they have clarified by section 111 of Finance Act 2022. Amendment was made in section 50. जो interest का section है, section 53 में एक amendment हुआ था to for the CGST Act to provide for levy of interest on ineligible ITC availed and utilized. Basically, what they say, unless you take the benefit of ITC to pay the tax liability, there should not be any interest liability on it. So avail and utilize उन्होंने ऐड किया था retrospectively from 1/7/2017. However, this provision was not brought into force. Now with effect from 5 जुलाई 2022 से इसको effective उन्होंने कर दिया गया. It is basically pending to be notified. Now they have notified it also. So practically they have implemented this with retrospectively from 1/7/2017. So it is a major relief to the industry. Now whatever ITC they have availed, and if it is proved that it is wrongly availed, if it is not utilized, there should not be any levy of interest on under section 50. Notification 10, basically exemption granted by the to the taxpayer having aggregate turnover up to 2 crore rupees in a financial year 21-22 for filing annual return for the state financial year. So previous years में भी already ये exemption था, it is also continuing for financial year 21-22 also. Notification 11 and 12. Extension of time limit for CMP 08 and GSTR 4 by a composition supplier. तो जो भी ये जो मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं जो कंपोजिशन डीलर है, उनके भी जो टाइम लिमिट है एनुअल फाइलिंग की और क्वार्टरली फाइलिंग की, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है. तो जो CMP 08 की जो टाइम लिमिट थी वो प्रीवियसली 30 जून तक की एक्सटेंड की गई थी. नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई 2022. फर्दर जो GSTR 4 एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी, उसकी जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंडेड टिल 28 जुलाई. अर्लियर द वेवर्स वर प्रपोज्ड फॉर 30 जून. तो 30 जून को भी फर्दर एक्सटेंड कर दिया 28 जुलाई 2022 तक. नोटिफिकेशन 13, सेंट्रल टैक्स. Extension of issuing time limit for issuing order and show cause notice under section 73 and filing refund application under section 54 and 55. So basically अभी तक हम देख रहे हैं कि most of the CGST and SGST officials could not issue a show cause notice. So they are facing how to go scrutinize the transaction of 17-18 because already due date for time limit already उसकी lapse हो रही थी. तो गवर्नमेंट ने कहा कि now we will be extending. तो दे हैव द बेसिकली उनके पास एक इसका कोरोना कांड भी हो सकता, उसके कारण हम वर्क नहीं कर पाए. सो नाउ दे हैव एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट टू इशू द बेसिकली पास द ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंगली द शो कॉज नोटिस का भी जो टाइम लिमिट है उसको भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18. सो व्हाट दे हैव सेड, द ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 ऑफ CGST हैज टू बी इशूड विद इन 3 years फ्रॉम. तो बेसिकली जो प्रोविजन है कि 3 साल के अंदर ये ऑर्डर पास करना है. फर्स्ट, the due date of furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid, short paid, input tax credit wrongly availed or utilized relates to, or within 3 years from the date of erroneous refund. तो यहाँ तक के 3 साल तक के ये ऑर्डर पास कर सकते थे. Now the show cause notice को इशू करने का सर्व करने का पीरियड था. The show cause notice can be issued within 3 months prior to the above limitation period specified for issuance of the order. तो जो भी फॉर एग्जांपल इसमें ये मानते हैं कि जो एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वहां से 3 साल अलाउ किया गया फॉर शो कॉज बेसिकली पासिंग द ऑर्डर. और जो ऑर्डर पास होगा उसके 3 महीने के पहले कम से कम शो कॉज नोटिस मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया जाना चाहिए शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए. तो शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड 3 months prior to the above limitation period. तो above limitation of period for issuing show cause notice is extended as under. क्या एक्सटेंशन हुआ बेसिकली for recovery of tax not paid, short paid, or input tax credit wrongly availed or utilized in respect of the financial year 17-18. Order can be issued till 30 September 2023. So basically यहाँ पर order can be issued till
30 सितंबर 2023 को एक्सटेंड कर दिया गया। और शो कॉज नोटिस जो 3 महीने पहले होना चाहिए, तो इट कैन बी इशूड टिल 30 जून 2023। So 3 months time will be minimum time should be given to the taxpayer to show cause for the recovery of erroneous refund granted। कि जो भी कुछ रिफंड ग्रांट कर दिया गया, बाद में ये प्रूव होता है कि वो एरोनियसली ग्रांट किया गया था, तो उसकी रिकवरी के लिए जो टाइम लिमिट है उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, जो लिमिटेशन पीरियड था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। कौन सा पीरियड? जो कोरोना वाला पीरियड है। तो गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब व्हाट इज द पीरियड शुड बी एक्सक्लूडेड फॉर काउंटिंग ऑफ लिमिटेशन। तो वहां पर क्या गया, 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 को पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया गया फॉर काउंटिंग द लिमिटेशन पीरियड। फर्दर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिफंड एप्लीकेशन, जो हम भी जो रिफंड एप्लीकेशन कर सकते हैं उसको भी करस्पॉन्डिंगली चेंज किया गया, और जो 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2022 तक के पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो जो टाइम लिमिट है कि जहां तक हम 2 साल तक के हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं डेट ऑफ पेमेंट और डिफरेंट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से, तो उस केसेस में अब वो टाइम लिमिट में ये जो पीरियड है लिमिटेशन पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। So now what will be the limit? The extension of time limit for issuing show cause notice and passing order for recovery of tax not paid, short paid, ITC wrongly availed or utilized। तो ये जो करंट लिमिटेशन पीरियड है, आप फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे करंट लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइनेंशियल 17-18। तो बेसिकली प्रीवियसली 17-18 की जो ड्यू डेट थी एनुअल रिटर्न की, इट इज 31 जनवरी 2020। उसके बाद तो इसकी जो टाइम लिमिट है 3 इयर्स बेसिकली। तो वहां से 3 साल का आपको टाइम लिमिट फॉर जो 3 साल था वो एंड होता था 31 जनवरी 2023 ऑर्डर पास करने का, और उसके 3 महीने पहले तो बेसिकली 31 अक्टूबर 2022 तक हमको शो कॉज नोटिस इशू करना था। दिस इज द करंट लिमिटेशन पीरियड फॉर 17-18। Now they have extended through this notification what they said, the time limit for issuing the show cause notice under section 73, the time limit for passing order under section 73। तो यहाँ पर जो ऑर्डर की जो पास करने की टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया टिल 30 सितंबर 2023 तक के। और उसके बाद यहाँ पर शो कॉज नोटिस का जो टाइम पीरियड है उसके 3 महीने पहले 30 जून 2023 तक के एक्सटेंड कर दिया गया। तो गवर्नमेंट हैज फॉर देयर कंफर्ट and issuing the show cause notice is because section 73 में 3 years की time limit है, and similarly for section 74 5-year time limit is there। So nearby time limits for 73 is about to come, so they have issued the extension time limit। Even if there is a delay in the show cause notice, they can further extend as per their comfort। For the extension of time limit for issuing show cause notice and passing order for recovery of erroneous refund, तो करंट लिमिट थी जो टाइम लिमिट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। वी आर नॉट गोइंग टू इन डिटेल इन दिस, यू कैन रिव्यू द लोकेशन बेसिकली द नोटिफिकेशन। तो जो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट था गवर्नमेंट का कि जो एरोनियस रिफंड है या न्यू रिफंड है उसमें कुछ पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट आर द अमेंडमेंट्स मेड इन रूल्स, that is CGST rules 2022 with notification number 14/2022 central tax। Automatic revocation of suspension of registration, it is a major move। what is the scenario basically कि एक नॉन कंप्लायंस जो करता है टैक्स पेयर, दैट इज कि वो अपने जो रिटर्न है रेगुलर टैक्स पेयर है 6 महीने के रिटर्न कंटिन्यूसली फाइल नहीं करता, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो कंसेक्यूटिव 3 कॉन्सेक्यूटिव टैक्स पेयर रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उस केसेस में उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली बेसिकली कैंसिल हो जाता है। तो उस केसेस में बेसिकली फॉर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन वी हैव टू विजिट द ऑफिस और मेक द रिवोकेशन एप्लीकेशन। नाउ व्हाट दे हैव सेड कि अगर ये कंप्लायंस आप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दे विल रिवोक, यू हैव नॉट हैव टू मेक द रिवोकेशन एप्लीकेशन। With the registration of contribution taxpayer is taxpayer is suspended for non-filing of return for 3 consecutive tax period, or for other taxpayer for non-filing of return for continuous period of 6 months, and the registration is not cancelled by the proper officer under the rules, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending return। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर टाइम लिमिट नहीं किया, उसने कैंसिल नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये रिवोक किया गया है, तो उस केसेस में ऑटोमेटिकली ये कैंसिल किया गया है बिकॉज नॉन कंप्लायंस केस में, तो इट विल बी रिवोक ऑटोमेटिकली। You have do not have to make the revocation application for revoking your registration। Sale of duty scripts not to be considered for ITC reversal। तो जो कस्टम के टाइम में ड्यूटी स्क्रिप्ट ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती थी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब उसको आपको कंसीडर नहीं करना है बेसिकली फॉर कैलकुलेशन ऑफ
बेसिकली फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी कैलकुलेशन में वो कंसिडर नहीं करना है. Declaration to be added in the notice issued by the supplier not required to prepare e-invoice. अब basically जो e-invoice के requirement है right now it is applicable for any taxpayer having aggregate PAN based turnover exceeding 20 crore rupees. तो अब उसमें एक इश्यू होता है, कुछ लोगों को इसमें एग्जेम्पशन दिया गया था कि उनको ई इनवॉइस इशू नहीं करना है irrespective of their turnover. Now they have said they have to make a declaration in their invoice. So what is the declaration? It is very important for all the viewers that they should guide their client that this is the declaration, this is must be required through this notification, because otherwise they will not give this the declaration. They can be liable to a general penalty for this. So what is the declaration they have to give? So basically, as per notification 13 of the 2020, the following tax category of taxpayer not required to generate e-invoice, even if they exceed the threshold limit for generating e-invoice, जो अभी 20 करोड़ की है. तो insurer or banking company or a financial institution, including a non-banking financial company or good transport agency, so irrespective of their turnover, they are not required to issue basically e-invoice. Supplying passenger transportation service, person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens, SEZ units. तो इसको यहाँ इनको exemptions था. Now the above taxpayers are now required to provide the below declaration. तुमको क्या declaration provide करना है? That we hereby declare that though our aggregate turnover in preceding financial year from 17-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub-rule 4 of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provision of the said sub-rule. तो यहाँ पर हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है because we have been granted exemption कि हमको इनवॉइस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है even though our aggregate turnover exceeds the prescribed limit for issuing the e-invoice. तो ये एक जो प्रोविजन था उनको ये डिक्लेरेशन अपनी इनवॉइस में देना पड़ेगा. So this is effective by the notification 14 of 2022. Now recredit of ITC after recovery of erroneous refund. So if a taxpayer deposits the following category of refund sanctioned to him erroneously, along with interest and penalty as leviable through form GST DRC 03 by debit of amount of electronic cash, an amount equivalent to the amount of erroneous refunds so deposited by the taxpayer will be credited in the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in form GST PMT 03A. This is the form prescribed कि किसी कारण से आपको कोई erroneously रिफंड हुआ, अब उसको आपने पे कर दिया along with interest and penalty कि आपको जो रिफंड हुआ था वो गलत हो गया था. तो आप वो जब रिफंड करते हो तो जितना अमाउंट आपने कैश लेजर से पेमेंट किया है इट विल बी रिक्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो प्रीवियसली मैकेनिज्म इज लैकिंग देयर और हमको ये प्रॉब्लम आ रही थी इंडस्ट्री केस में, तो उन्होंने एक फॉर्म प्रिस्क्राइब कर दिया फॉर्म GST PMT 03A, जहां पर ये कहा गया कि इन केसेस में आपको रिफंड बेसिकली रिक्रेडिट किया जाएगा. फर्स्ट, रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट जिसका आपको erroneous रिफंड हुआ, रिफंड ऑफ unutilized ITC on account of export of goods service without payment of tax, refund of unutilized ITC on account of zero tax supplied to SEZ developer or unit without payment of tax, refund of unutilized ITC due to inverted tax structure. तो इन केसेस में आपको रिफंड मिला, बाद में ये प्रूव हुआ कि ये erroneously रिफंड था, आपने इसको कैश लेजर को डेबिट करके DRC 03 के थ्रू पे किया along with interest and penalty. Now what is the matter that कि जो आपने ITC आपको वापस मिले आपके क्रेडिट लेजर में, तो उसको देने का मैकेनिज्म फॉर्म GST PMT 03A प्रिस्क्राइब किया गया. This will enable the taxpayer to get the recredit of the amount of erroneous refund paid back by them in the electronic credit ledger. The detail with regard to procedure for effecting the recredit shall be prescribed in Circular 174/06/2022 dated 6 July 2022, which is discussed in the subsequent slides. We will be discussing all this issues. What is the procedure basically to get this recredit? Now amendment has been made for additional mode of payment. ये इंडस्ट्री की ये मांग थी कि जब ऑलरेडी जो दो ही तरीके से मैकेनिज्म था, एक तो बेसिकली RTGS एक तो ऑप्शन था पेमेंट का, या इंटरनेट बैंकिंग थी, या ओवर द काउंटर कुछ अमाउंट तक के अलाउड था. तो इसको गवर्नमेंट ने अब इस स्कोप को बढ़ा दिया है. UPI से भी पेमेंट आप कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी का, और इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS फ्रॉम एनी बैंक एज एडिशनल मोड ऑफ पेमेंट. तो ये एडिशनल मोड ऑफ पेमेंट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए ऐड किया गया. वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, so what they have prescribed that
An explanation in Rule 89.4 added to provide that in cases involving refund of ITC on account of zero dated supply without payment of tax, the value of goods exported will be the FOB value declared on the shipping bill or bill of export, or the value declared on the tax invoice or bill of supply, whichever is less. तो ये अब उसकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड की वैल्यूएशन इस तरीके से किया जाएगा. Manner of calculation of interest on delayed payment of tax on or ITC wrongly utilized. So क्या होगा? So basically, Rule 88 being inserted in the CBSE rule to provide the manner in which delayed payment of tax or ITC wrongly utilized shall be calculated for delay in filing GST 3B return. But before commencement of proceeding under 73 and 74, interest payable only on the portion of tax which is paid by the debiting the electronic cash ledger, or interest to be paid for the period of delay in filing the return. तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा. अदर केसेस इनवॉइसिंग पर्टेनिंग टू अप्रैल 22 रिपोर्टेड इन जीएसटी 3B ऑफ जून 22. तो यहाँ पर पुरानी इनवॉइस को हमने जून में रिपोर्ट किया गया जीएसटी 3B में. इंटरेस्ट इज पेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट. तो जिस दिन अप्रैल में वो ड्यू हो गया था, तो वहां से लेके एक्चुअल पेमेंट ऑफ डेट तक के इंटरेस्ट आपको लेवेबल होगा. ITC wrongly claimed and utilized जो है उसका मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. Interest shall be calculated by amount of ITC wrongly availed and utilized. तो सेक्शन 53 में जो अमेंडमेंट हुआ उसी को यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर दिया. तो इंटरेस्ट shall be calculated by amount of ITC wrongly availed and utilized. उसके अलावा इंटरेस्ट पेबल फॉर द पेड स्टेटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ सच wrongly availed ITC till the date of reversal of payment of such wrongly utilized ITC. तो बेसिकली अवेलमेंट की डेट से आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा जिस पीरियड में आप आईटीसी को यूटिलाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक किसी पीरियड का 1 लाख रुपए आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल्ड कर लिया, बट अगर आपने आज तक उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसको आप पे कर देते हैं, तो देयर विल नो इंटरेस्ट विल बी लेवेबल. आपको इंटरेस्ट लेवेबल तभी होगा जब आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और जब यूटिलाइज कर लेते हैं, जिस दिन यूटिलाइज करते हैं टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट, उस दिन तक के आपको इंटरेस्ट लगेगा. ITC wrongly availed shall be considered to have been utilized when the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed. The extent of such utilization of ITC shall be the amount by which the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed. For example, आपने 1 लाख का wrongly availed किया ITC, और आपका किसी आगे के सब्सिक्वेंट मंथ में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है वो 70,000 हो गया, और फिर उसके बाद में इंक्रीज हो गया. तो ये माना जाएगा कि जो 30,000 है आपने वो रॉन्गली यूटिलाइज किया है, और उस 30,000 का ही आपको इंटरेस्ट पेमेंट होगा टिल द डेट यू हैव यूटिलाइज्ड फ्रॉम द डेट यू हैव यूटिलाइज्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ दैट आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेसिकली ये एक्सपोर्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेरी रेयर केसेस हैं. Very few units in India will be going through this, so we will not be discussing because it is not relevant for all the major taxpayers. Now, basic major changes in the case of VKC Foods. in इस step पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वहां पर ये पॉइंट आउट किया गया था कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो रिफंड का फॉर्मूला है उसको चेंज किया जाए. तो गवर्नमेंट को इस नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंड कर दिया गया. Now it will be having a favorable result for the taxpayer. तो अब जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बेसिकली उन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो आउटपुट के रेट है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर दिए गए हैं. तो कोशिश कर उनकी पहले से यही है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सिनेरियो ही जनरेट ना हो. बट नाउ दे हैव चेंज द फॉर्मूला कंसीडरिंग द सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट गाइडलाइंस, और जो उन्होंने ऑर्डर पास किया उसके हिसाब से वो फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया. सो दे हैव व्हाट द न्यू फॉर्मूला इज दिस. तो बेसिकली यहाँ मैक्सिमम रिफंड अमाउंट का जो फॉर्मूला है इट विल बी लाइक दिस: turnover of inverted rate supply of goods and services into net ITC divided by adjusted total turnover, और इसके बाद माइनस करना है बेसिकली टैक्स पेबल ऑन सच inverted rate of supply of goods and services into net ITC divided by ITC availed on input and input tax services. तो बेसिकली इट इज अ फेवरेबल. आपको कुछ ITC जो बेसिकली जो रिफंड अमाउंट है जो प्रीवियस फॉर्मूले से इंक्रीज होकर इसमें मिलेगा. So above formula prescribed to determine the maximum amount of refund in amendment to take into account of utilization of ITC on account of input and input services for payment of output tax or inverted rate of supply in same ratio in which ITC has been availed on input and input services during the state tax period. Refund of respect of supply made by duty free shop to be granted as export supply. तो अपन ये डिस्कस किया कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स है जहां पर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है
which supply goods to the foreigners, basically जो immigrants है जो बाहर जाते हैं उनको ये गुड सप्लाई करते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाए, ताकि उनको जो भी उनके जो इनपुट जो परचेज में जो इनपुट्स मिला है उसका रिफंड को तैयार किया जाए. तो इन द 47 GST Council meeting, the GST Council has recommended that supply from duty-free shops at international terminal to outgoing international passengers are to be treated as export by DFS, and consequential refund benefit to be available to them on such supply. So the refund in respect of supply made by duty-free shop will be granted on export supply. Accordingly, Rule 95A, which prescribes separate procedure for claiming the refund in such scenario, is omitted retrospectively with effect from 1 July 2019 by notification 14/2022, and the rated circular number 106/25/2019 GST dated 29 June 2019 also withdrawn through circular number 176/08/2022 dated 6 July 2022. बेसिकली हम ये जो कॉन्सेप्ट था, ये इंडस्ट्री की डिमांड थी कि जब एक्सपोर्टर यहाँ से जाए तो उसको जो कमोडिटी का कॉस्ट है वो रिड्यूस प्राइस में मिले. फॉर एग्जांपल, अगर हम दुबई में जाएंगे जहाँ वैट इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर कोई भी जो फॉरेनर या इंडियन पर्सन दुबई जाता है और जो रिटर्न होता है कुछ गुड्स परचेस करता है, तो उसमें जो भी टैक्स होता है उसको एयरपोर्ट में वहां पर रिफंड किया जाता है. तो ये सेम सिनेरियो इंडिया में भी डिमांड है कि जो जीएसटी में भी है, बेसिकली द पर्पस की एक्सपोर्ट इज 0% टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट. जो प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसको रिड्यूस करना फॉर फॉरेनर टू अट्रैक्ट द मोर फॉरेनर इन द कंट्री. तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की हर कंट्री ये पॉलिसी अपनाती है कि एक्सपोर्ट को टैक्स के दायरे से बाहर रखती है, ताकि उसके कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, इफेक्टिव प्राइस को रिड्यूस किया जाए. तो उसी तरीके से उसी लाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब आगे बढ़ रही है जीएसटी लॉ में. सो बेसिकली यहाँ पर अगर रिफंड होगा तो बेसिकली जो एक्सपोर्ट में जो गुड्स दे रहे हैं उससे भी कॉस्ट रिड्यूस होगा. Withholding the claim filed by refund of integrated tax paid on export of services. So sub rule 4 of rule 96 prescribe the situation in which claim for refund of integrated tax paid on export of goods can be withheld. By inserting a new clause C, the above sub rule new scenario is added in which claim can be withheld. It is provided that the refund claim can be withheld if the commissioner and the board of officer authorized by the board on the basis of data analysis and risk parameter is of the opinion that verification of credential of the exporter, including the availment of ITC by exporter, is considered essential before grant of refund. तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा प्रोसीजर उसमें डाला गया कि जहाँ रिस्की एक्सपोर्टर से बचा जा सके, और जहाँ पर ये डेटा उनके पास ऐसे कुछ पैरामीटर्स, रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से लगता है कि इनको ये इनकी जो आईटीसी अवेलेबिलिटी है उसको चेक करना है, तो उस केस में रिफंड को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं. तो दिस इज नाउ टू अवॉइड द रिस्की एक्सपोर्टर्स, जहां पर वो गलत तरीके से ही आईटीसी का रिफंड ले रहे थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चेक प्रोसीजर बीच में इंसर्ट कर दिया. Expedite the refund claim of risky exporter on the recommendation of GST Council for expeditious disposal of IGST refund claim. Sub Rule 5A and 5B inserted in Rule 96 of CGST rule to provide for transmission of such IGST refund claim which are withheld under 96 on the portal in the system generated from GST or RFD01 to jurisdictional GST authority for processing. Such refund claim transmitted this shall be dealt in accordance with the provisional Rule 89. तो डिटेल चेक के बाद ही आपको रिफंड किया जाएगा. Amendment to Rule 96 of CGST rule, the refund of integrated tax paid on goods or services exported out of India. The application has furnished a valid return of Form 3B or this as the case may be. So before amendment ये process था. Now refund of integrated tax paid on goods exported out of India. तो नया amendment के बाद ये जो provision रहेगा, the applicant has furnished a valid Form 3B, provided if there is any mismatch between the data furnished by the exporter of goods in shipping bill and those furnished in the statement of outward supply in Form GST or 1, such application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of India shall be deemed to have been filed on such date when such mismatch in respect of the state billing is rectified by the exporter. तो जब भी आपको मिल जाएगा, जब वो rectified आप exporter rectify करे. Above amendment is welcome step in the case of mismatch between the details of shipping bill and the detail of furnished in GST 1. The date of rectification of such mismatch will be considered as a date on which the refund claim can be claimed. Okay. Refund of taxable supply by e-commerce operator and registered person making supply through e-commerce operator. तो e-commerce operator के थ्रू जो सप्लाई करते हैं, तो e-commerce operator is liable to pay GST on restaurant services supplied through
them under Section 95 of the CGST Act. However, the mechanism to report the supply by e-commerce operator or the person supplying such services through e-commerce operator in GST 3B return was not provided. Necessary changes to be made in Form 3B to provide facility for reporting such supplies by inserting a new table 3.1.1 in GST 3B. Notified changes in clarification in GST returns. GST रिटर्न्स में बहुत सारे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने कहा कि बिफोर नोटिफिकेशन इस तरीके से आपका आईटीसी का टेबल दिखता है, आफ्टर नोटिफिकेशन दे हैव क्लैरिफाइड वेरियस थिंग्स. अभी तक के 17 18 अपन हर साल में हर जो टैक्स पेयर है या कंसल्टेंट है या तो जो क्लाइंट है वो अपने हिसाब से आईटीसी को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट कर रहा था. So now they have provided a standardized mechanism and issued a basically notification कि how you should report. तो पोस्ट नोटिफिकेशन ये क्या होगा, ये पोस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि जो आईटीसी बेसिकली जो कॉलम ए है 4A वो एज इट इज रहेगा, और जो आईटीसी रिवर्स है बेसिकली जो आईटीसी रिवर्स वाला कॉलम है यहाँ पर एज पर रूल 42 43 ऑफ सीजीएसटी रूल एग्जिस्टिंग था और उसको रिप्लेस कर दिए यहाँ पर आप पोस्ट नोटिफिकेशन एज पर रूल 38 42 एंड 43 सीजीएसटी रूल एंड सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 70. मतलब जो ब्लॉक क्रेडिट भी है उसको भी अब यहीं पर रिपोर्ट करना है. तो बेसिकली यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं कि जो विच इज द परमानेंट रिवर्सल जो आपको कभी भी अवेलेबल नहीं होगा उसको हमको रूल 4B1 में रिपोर्ट करना है. 4B1 जो प्रिस्क्राइब है, तो यहाँ पर ये जो 42 43 में 38 42 43 और 17 बेसिकली क्रेडिट नोट को भी इसमें कवर कर लिया. तो जो भी आईटीसी हमको कभी नहीं मिलने वाला है परमानेंट रिवर्सल है उसको आपको रिपोर्टिंग करना रहेगा इस कॉलम में. उसके अलावा अदर्स का कॉलम एज इट इज रहेगा और जो नेट आईटीसी अवेलेबल वो भी रहेगा. डी वाला जो पॉइंट है वो चेंज हो गया, तो 17.5 को ऊपर कर दिया. तो नाउ आईटी अदर डिटेल्स में जो रिक्वायरमेंट रहेगी, अदर रिक्लेम्ड क्रेडिट वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4BT इन अर्लियर टैक्स पीरियड. तो किसी कारण से फॉर एग्जांपल जो 2 में 4B2 जो अदर्स कॉलम में किसी कारण से आपने रिवर्सल किया, टेम्पररी रिवर्सल ड्यू टू नॉन 16(4) का नॉन कंप्लायंस है या अदर नॉन कंप्लायंस है या फिर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कि आपने बाद में रिवर्स कर दिया, तो उस केसेस में अगर आपने पहले रिवर्स किया बाद में वो एलिजिबल हो गया तो आपको रिक्लेम करना है, तो ये अदर डिटेल्स में आप रिक्लेम कर सकते हैं. एंड सिमिलरली फॉर 16(4) जहां पर आप पेमेंट लेट करते हैं, रिटर्न लेट फाइल करते हैं और उसके कारण आपको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है और लेटर ऑन यू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन, तो आप उसको आईटीसी आपको मिल जाता है, तो उस केसेस में भी यहाँ पर आपको रिवर्सल रिक्लेम आप कर सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली मेजर चेंजेस. और ये कुछ उन्होंने प्रिस्क्राइब किया किस तरीके से ऑटो पॉपुलेशन ये फॉर्म होगा. तो ऑल अदर आईटी बेसिकली जो आईटीसी इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटी टू बी बट एडिटेबल, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू बी एडेड मैनुअली बाय रजिस्टर्ड पर्सन. तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली 2B में नहीं रिफ्लेक्ट होगा तो ये मैनुअली इंटरसेट करना है. इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव, ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटी टू बी बट एडिटेबल. तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो रजिस्टर्ड जीटीए सप्लायर्स हैं अगर वो रिपोर्ट करते हैं रिवर्स चार्ज की हमारी को लायबिलिटी है तो ये ऑटो रिफ्लेक्ट होगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं कि हमारे जो जिससे हम जीटीए सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं वो आधे रजिस्टर्ड रहते हैं आधे नहीं रजिस्टर्ड या मोस्ट ऑफ द केसेस नॉट रजिस्टर्ड रहते हैं. तो इट इज एडिटेबल फॉर्म, यू कैन एडिट एज पर योर जीटीए सर्विसेज रिसीव फॉर द टैक्सेबल पीरियड. Inward supply for input service distributor auto populated from GST 3 to B but editable. All other ITC, तो बेसिकली ऑल अदर आईटीसी जो है उसको एक्सप्लेन किया गया. तो ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी फ्रॉम 2B जो टाइम से आपके फॉर एग्जांपल अगर हम जून पीरियड की बात करें तो 11 जुलाई और 13 जुलाई रेगुलर फॉर 11 जुलाई इज फॉर रेगुलर और जो कहते हैं QRMPS स्कीम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की उसकी 13 जुलाई. तो वहां तक के जो रिटर्न फाइल करते हैं वो 2B में वहां रिफ्लेक्ट होता है, तो वहां से वो डेटा फैच करेगा. तो ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम आईटीसी फ्रॉम जीएसटी 2B other than time bar and different point of supply, point of sale that then registered state. ITC not availed earlier appearing the previous tax paid to be can be added manually. कि जो भी ITC आपने अवेल नहीं किया previous tax paid में तो बिकॉज वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा 2B में can be added manually. अब वो रिफ्लेक्ट होने लग गया है 2A में दिखने लग गया है आपको तो आप ऐड कर सकते हैं manually. Reclaim of ITC on fulfillment of necessary condition the rule 37. Reclaim of ITC in respect of input reverse previously on account of 16(2)B and 16(2)C. तो यहाँ पर जो आपने बेसिकली रिवर्सल किया था कुछ भी आईटीसी का नॉन पेमेंट 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया उसे कारण रिवर्सल किया तो उसको भी आप रिक्लेम कर सकते हैं. और एनी अदर आईटीसी विच इज एलिजिबल नॉट अवेल्ड अर्लियर. तो जिस तरीके से रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी इज एग्जिस्टिंग तो इस तरीके से हम अभी तक हम ये इस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं.
तो ये अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई लोग नेट ऑफ आईटीसी, नेट ऑफ क्रेडिट नोट रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई ग्रॉसरी रिपोर्ट कर रहे हैं और आगे जाकर रिवर्सल कर रहे हैं। नाउ उसके अलावा आईटीसी रिवर्स में जो अपन अभी तक था रूल 42 43, परमानेंट और नॉन क्लेमेबल आईटीसी रिवर्स टू बी रिपोर्टेड इन दिस रो, क्रेडिट नोट, टाइम बार्ड आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी रिवर्सल अंडर 38 42 43। उसके अलावा जो अदर कॉलम था वो टेम्पररी एंड रिक्लेमेबल आईटीसी रिवर्सल शैल बी रिपोर्टेड इन दिस रो, दैट इज रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37, दैट इज पेमेंट ऑफ नॉट मेड विद इन 180 days, रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन 16(2)(b) एंड 16(2)(c, अदर रिवर्सल विच आर टेम्पररी इन नेचर, जो आगे जाके रिक्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा नेट आईटीसी अवेलेबल निकलता था और इनएलिजिबल आईटीसी में हम 17(5) का जो ब्लॉक क्रेडिट था वो रिक्वायर था, it is not required to be shown in this row, the same row are to be shown in the 44B1। तो अब यहाँ पर जब आगे जाके एक एक्सप्लेनेशन किया गया, ये 17(5) को हम रिमूव कर देंगे और इसको आगे ऊपर में ही प्रोवाइड कर देंगे। अदर्स ineligible ITC on account of limitation of tax time period has declined in 16(4) of the CGST Act, which has been not been auto populated in table 4A of 3B। तो ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ है, उसको आप रिक्लेम कर लीजिए। और रिसिपिएंट लोकेटेड इन स्टेट यूनिटरी फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू अ सप्लाई, तो इसको भी आप रिक्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदर किसी कारण से इस तरीके से इनएलिजिबल आईटीसी था, तो अब उसको यहाँ पर इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। नोटिफाइड चेंजेस इन जीएसटी रिटर्न 9। होप वी हैव a sufficient time, ma'am. Okay. Changes in table 5 of GST 9, that is with respect to non-GST related and exempt supply। तो क्या चेंजेस किया गया? Through notification 14/2022, CGST has made it mandatory to report non-GST supply in serial number 5F of GST 9 separately। अब यहाँ पे सेपरेट आपकी रिपोर्टिंग रहेगी नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए। फर्दर CG has allowed taxpayer to either separately report supply exempted and related supply against 5D and 5E respectively, or report consolidated information for these two heads in the exempted serial number 5D only। तो यहाँ पर ये बेसिकली इस तरीके से रिपोर्टिंग करना है, नॉन जीएसटी सप्लाई को सेपरेटली करना है, और फॉर एग्जाम्पल एग्जेम्प्ट सप्लाई और रिलेटेड के आपके पास ऑप्शन रहेगा आइदर टू शो इज सेपरेटली और कंसोलिडेटली इसको शो कर दे 5D में एग्जेम्प्टेड सप्लाई कैटेगरी में। Option for reporting table 18 GST 9, that is HSN wise reporting of inward supply। So by notification 14/2020 it is optional. It is also made optional for taxpayer to report HSN by summary of inward supply in table 18 और GST 9। तो HSN wise requirement it is a very hectic requirement और इसमें जनरली मोस्ट ऑफ द ये कंप्लाई नहीं हो पाती, तो इसको भी ऑप्शनल कर दिया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। Changes in table 17, that is with respect to HSN wise reporting of outward supply। तो यहाँ पर भी क्या किया गया? थ्रू नोटिफिकेशन 14/2022 tax has made central government has made it mandatory for the reporting of HSN by summary of outward supply in table 17। Following amendments are made, that is for taxpayer having annual turnover in preceding financial year above 5 crore, so reporting of outward supply along with 6-digit HSN code for all B2B and B2C supply in table 17 of GST 9 is mandatory now। And for taxpayer having annual turnover in preceding financial year up to 5 crore, reporting only toward outward supply of B2B, only B2B supplies to be reported, and that too 4-digit HSN code has to be reported। So this is basically changes in with respect to outward supply HSN code requirement। So now moving forward, for taxpayer having annual turnover, तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट बेसिकली 5 करोड़ से जनरली जो रिक्वायरमेंट थी HSN वाइज धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दिया। इनवर्ड सप्लाई में रिलैक्सेशन अभी है, आउटवर्ड सप्लाई में भी रिलैक्सेशन नहीं है। तो इट इज ऑलरेडी जीएसटी 1 में मोस्ट ऑफ द टैक्सपेयर ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं ये सब चीजें, तो बिकॉज इट इज ऑल्सो मेड मैंडेटरी देयर ऑल्सो नाउ। Further, basically a few circulars also issued there। So this is basically a summary of the circulars। This is the basically summary of circulars which is issued। तो एक बार समरी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सर्कुलर इशू हैं, क्या उसका इफेक्ट है।
तो सर्कुलर नंबर 170 जो है फॉर्म जीएसटी 3B रिवैम्प्ड इंक्रीज रिपोर्टिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी। सर्कुलर नंबर 171 इशू हुआ है जो क्लैरिफिकेशन मेड इशू ऑफ रिलेटेड टू फेक इनवॉइस एंड डिमांड एंड पैनल प्रोविजंस क्या अट्रैक्ट हो गए फेक इनवॉइसिंग केस में। सर्कुलर 172 जो इशू हुआ है वो इशू हुआ है फॉर क्लैरिफिकेशन मेड इशू लाइक डीम्ड एक्सपोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 17(5) बेसिकली ब्लॉक क्रेडिट का जो इंटरप्रिटेशन है उसके लिए। 173 इशू हुआ है क्लैरिफिकेशन इशू ऑफ क्लेमिंग रिफंड अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। 174 इशू हुआ है for manner of prescribed for recrediting erroneous refund amount paid back by taxpayer to its electronic credit ledger under form PMT 03A। 175 circular issue हुआ है basically manner prescribed for filing refund in case of export of electricity। and circular 176 issue हुआ है for circular number to remove the circular number dated this has been withdrawn as supply by duty free shop to outgoing international tourists shall be considered as export supply। so now we will be going in detail what are the basically what are the detail of the circulars issued। So first circular is 170। let's discuss the circular 170 furnishing of information regarding certain interstate supply in the GST return। तो जो इंटरस्टेट सप्लाई है उसके रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग ये क्लैरिफिकेशन है जो सर्कुलर इशू किया गया है। तो यहाँ पर क्या है certain infirmities were observed by filing information by the registered person in relation to interstate supply affected to unregistered person, composition taxable person and UIN holder in GSTR 3B return। Therefore, it is advised under। तो उसका जो अलग अलग तरीके से लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसका स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म क्या होगा उसको क्लैरिफाई किया गया है। तो डिटेल ऑफ सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन शॉल बी रिपोर्टेड प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज कि कहाँ किस स्टेट में है in table 3.2 of form 3B and table 7B or table 5, table 9 or 10 of form GSTR 1 as the case may be। Detail of supplier made to composition taxable person or to UIN holders shall be reported in place of supply wise। तो यहाँ पर भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ से हैं आप तो उड़ीसा कर रहे हैं महाराष्ट्र कर रहे हैं मध्य प्रदेश कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको इसकी रिपोर्टिंग करना है एज द केस में। Customer database to be updated properly with correct state name and ensure that the correct customer sorry for the interruption। Basically यहाँ पर एक और चेंज हुआ है जो GST customer database to be updated properly with correct state name and ensure that correct place of supply is declared in the tax invoice and table 3.2 of form 3B while filing their return। Any amendment carried out in table 9 and table 10 that is form GST 1 on any entry table 11 of form GST 1 related to supply should also be given effect to while reporting the figure in table 3.2 of the GSTR 3B। तो यहाँ पर आप देखते हैं किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करना है। तो फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ITC अवेल्ड रिवर्सल thereof and ineligible ITC in table 4 of the GSTR 3B। तो फर्स्ट टेबल 4A। तो table 4A is the total ITC that is eligible as well as ineligible auto populated from GSTR 2B except ITC ineligible on account of limitation of time period that is time limit के बाद हुआ and place of supply is different state। उसके अलावा ये बाकी सब चीज आ जाएंगे। 4A5 to also include re-availment of ITC earlier reversed in table 4B2 below and any other ITC which is eligible but not availed earlier। तो ये 4A5 का जो प्रोविजन है यहाँ पर इस तरीके से सबको रिपोर्ट करना है। 4B1 तो यहाँ 4B1 जो यहाँ पर बेसिकली जो 4A5 में टू ऑल्सो इंक्लूड तो यहाँ एक और चीज जो इंक्लूड करना हुआ है रीअवेलमेंट ऑफ ITC अर्लियर रिवर्स इन 4B2। मैंने किसी कारण से वो टेम्पररी रिवर्सल था या फॉर एग्जांपल नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया उसके कारण मैंने रिवर्स किया जब उसको पेमेंट करना पड़ा तो 16 के हिसाब से पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको मैं रीअवेल करना चाहता हूँ तो इस केस में 4A5 में इसकी रिपोर्टिंग होगी।
but to also include re-availment of ITC earlier reversed in 4B2 below and other ITC which is eligible but not availed earlier. तो किसी कारण से कोई ITC आपका अवेल नहीं कर पाए थे प्रीवियसली, तो आप उसको री-अवेल कर सकते हैं, या 2B के बियॉन्ड वो होगा। 4B1 रिवर्सल ऑफ परमानेंट नेचर, तो बेसिकली यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि 4B1 इज अ परमानेंट, जहां पर आपको कंपलसरी जो रिवर्सल है तो आप फिर से आप रिक्लेम नहीं कर सकते। वंस यू हैव रिपोर्टेड इन 4B1 you are declaring that it is a permanent reversal of ITC, you cannot re-avail in the later stage. So reversal of permanent nature basically rule 42 43 common ITC and ITC ineligible under section 17(5). तो ITC ineligible को भी यहाँ पर कवर कर दिया गया। तो ब्लॉक क्रेडिट का जो ITC है, फॉर एग्जांपल कार के केस में, या फिर सब फूड्स जो यूज करते हैं, तो इस तरह की रेंटिंग ऑफ मोटर कार, आप रेंट पे ले रहे हैं मोटर कार, तो ये जो, या फिर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो वेरियस जहाँ पर ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट है 17(5) में, तो उस केसेस में कवर करते हुए उनको भी यहाँ से अब उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर परमानेंट नेचर का रिवर्सल है, वहां पर इसको 4B1 में करना है। और 4B2 बेसिकली है रिवर्सल नॉट अ परमानेंट नेचर दैट कैन बी रीअवेल्ड, तो लेटर स्टेज में रीअवेल कर सकते हैं। तो वैसे कौन कौन से हैं? रिवर्सल अंडर रूल 37 दैट इज नॉन पेमेंट टू वेंडर विद इन 180 डेज, तो 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते तो हमको रिवर्सल करना पड़ता है, और उसके बाद जब उसको पेमेंट कर देते हैं तो वापस रिक्लेम कर सकते हैं, तो दैट कैन बी रिक्लेम्ड हियर ओनली। सेक्शन 16 2B नॉन रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी कारण से 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, तो यू हैव टू रिवर्स दिस later on when it is goods is received, because section 16 eligibility of ITC की requirement है to take avail the ITC you must take the possession, you must have a possession of goods also। तो अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है, सामने उन्होंने बिल रेज कर दिया, इट इज रिफ्लेक्टिंग इन GST 2B, बट योर गुड्स हैज नॉट रिसीव्ड एट योर प्रीमाइसेस, नॉट इन योर पोजीशन, यू कैन नॉट अवेल द ITC। तो ये उस केस में आपको रिवर्स करते हैं, और जिस केस में जब आपको उसको रिसीव हो जाता है आप री अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 2C ITC अर्लियर टेकन इन टेबल 4A बिकॉज ऑफ इनएडवर्टेंट मिस्टेक, किसी कारण से आपने कोई गलती से आपने कोई ITC अवेल कर लिया, उसको रिवर्स। तो रिवर्सल नॉट ऑफ परमानेंट नेचर दैट कैन बी रीअवेल्ड, तो ये इस तरीके से यहाँ पर रिवल होगा। डिटेल 4D डिटेल ऑफ इनएलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 17(5) नॉट टू बी प्रोवाइडेड, यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। टेबल 4D2 ITC ineligible on account of limitation time period and for place of supply in different state, तो यहाँ इसकी रिपोर्टिंग करना है। डिटेल्स अवेलेबल इन टेबल 4 ऑफ फॉर्म GST 2B, तो वहां से ये ऑटो पॉपुलेट होगा। तो बेसिकली ये चेंजेस हुआ है यहाँ पर। अब सेकंड सर्कुलर नंबर 171, सर्कुलर नंबर 171 प्रिस्क्राइब करता है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी इन केस ऑफ फेक इनवॉइसिंग। और यहाँ पर जो मेजर चैलेंज था कि फॉर एग्जांपल फेक इनवॉइसिंग इशू हो रही है A to B, B to C, C to D, तो व्हाट विल बी पैनल कॉन्सिक्वेंसेस, किस तरीके से पैनल कॉन्सिक्वेंसेस है, तो कुछ सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं जहां पर किस तरीके से क्लैरिफिकेशन आपको लगेगा। फॉर एग्जांपल सिनेरियो A has issued tax invoice to another registered person B without any underlying supply of goods or services, पैनल एक्शन क्या लिया जाएगा एक को। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो नॉन कंप्लायंस है क्या है कि यहाँ पर जो बेसिकली जो वॉयलेशन है, इट इज वॉयलेशन इज क्या है कि हमने जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, बस इनवॉइस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ जो पैनल एक्शन है ए के अगेंस्ट में क्या क्या ले सकते हैं, तो क्लैरिफिकेशन किया गया no underlying supply of goods or services of both therefore such an activity does not satisfy the criteria of supply। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दिया गया इट इज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गुड्स सप्लाई नहीं हुआ, ओनली इनवॉइसेस दी गई है। नो पैनल एक्शन अंडर सेक्शन 73 और 74 रिक्वायर्ड, यहाँ पर जो पैनल एक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा अंडर सेक्शन 122(1) सबसेक्शन 2 और द CGST एक्ट अगेंस्ट ए टू बी टेकन फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। तो 73 74 जो केसेस है कि बेसिकली जहां पर हम कोई गलत तरीके से ITC अवेल करते हैं, रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स, ज्यादा कम शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, रॉन्ग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें कवर नहीं किया जाएगा 73 74 में। इसको सीधा पैनल सेक्शन 122 जो है जहां पर प्रिस्क्राइब किया गया है कि जहां पर आपका जो टैक्स इनवॉइस इशू करते हो विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, उस केस में इसको कवर किया जाएगा। बी अवेल IT and utilize ITC on the basis of tax invoice issued by A विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर बी अवेल कर लिया उस ITC को जो आपने इशू किया था, एंड यूटिलाइज ITC ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस इशूड बाय ए विदाउट अंडरलाइंग टैक्स सप्लाई ऑफ गुड्स। तो व्हाट इज द पैनल एक्शन अगेंस्ट बी? अब बी के अगेंस्ट में क्या एक्शन होगा? तो पैनल एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट बी अंडर सेक्शन 74 ऑफ द CGST एक्ट
along with applicable interest under section 50 of the said act. तो यहाँ penal action B 74 में क्या होगा? Because यहाँ पर आपने अपना wrongly availment of ITC और section 74 है fraudulently taking the ITC, तो वहां पर आपको 74 में आपको पेनल लगेगा. उसके अलावा section 75(13) no penal action can be taken under section 182 if action taken in 74. तो यहाँ क्लियर कर दिया गया कि अगर 74, 73, 74 में अगर एक्शन लिया गया है तो 75(13) no penal action can be taken under section 122 if taken in 74. तो एक ही जगह पे आपको उसको पेनल एक्शन होगा, मल्टीपल जगह पे आपको उसको पेनल एक्शन नहीं होगा. Now moving forward, next scenario, A issued a tax invoice to B without any underlying supply of goods or services B, and B avail ITC on the basis of said tax invoice and issue further invoice to C without underlying supply of goods or services, penal action against B. अब वो B ने भी फर्दर सप्लाई कर दिया और फर्दर इनवॉइस C विदाउट अंडरलाइंग C को सप्लाई कर दिया, तो इस केस में B इस ट्रांजैक्शन में B को क्या पेनल्टी लगेगी? तो व्हाट इज दिस क्लैरिफिकेशन? That no demand and recovery of either ITC wrongly, fraudulently availed by B or tax liability in respect of transaction by B to C is required to be made from B under section 73 and 74 of the GST Act. Penal action against B to be taken under section 122(1)(2) and section 122(1)(7). क्या क्या है यहाँ पर? For issuing invoice without any actual supply of goods or services, and or सर्विसेज ऑल्सो फॉर टेकिंग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो दो जगह पे ये पेनल एक्शन लगेगा. इस केस में बी ने रॉन्गली एक तो इनपुट भी ले लिया, उसके फिर फर्दर सप्लाई कर दिया सी में, तो 73 74 में एक्शन नहीं होगा, लेकिन 122 के दो सेक्शन अफेक्ट हो जाएंगे. एक तो हो जाएगा सप्लाइंग ऑफ गुड्स विदाउट मूवमेंट ऑफ विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ इनवॉइसेज विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक और है टेकिंग ऑफ आईटीसी without actual receipt of goods or services. तो दो जगह पे आपको penal action लगेंगे. It is also clarified that in addition to above, the provision of 132 of CGST also be invocable. तो वहां के भी penal consequences आपको लगेंगे. Section अब circular 172. Circular 172 क्या prescribe है? Refund claim by the recipient of supply regarding this deemed export. So recipient of deemed export supply are facing difficulty on the portal to claim the refund of tax paid due to requirement of portal to debit the amount so claimed from the electronic credit ledger. ठीक है, तो ये जो इशू था यहाँ पर कि अमाउंट क्लेम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके मिलेगा. Considering the award difficulty, tax paid on such supply has been made available as ITC to the recipient only for enabling them to claim such refund on the portal and is not ITC in terms of the provision of Chapter 5 of the CGST Act. So ITC so availed by the recipient on deemed export supply will not be subject to provision of Section 70 of CGST Act, and such as ITC also not to be included in the net ITC for computation of refund of unutilized ITC on account of zero rated supply on account of inverted rated structure. ITC on leasing, renting or hiring of motor vehicle, vessel or aircraft. तो इसमें clarification लिया गया. It has been clarified that ITC shall be ineligible under section 17(5) or 17(5)(d) subsection clause 1 only in related to leasing or renting or hiring of motor vehicle designed to carry passenger having seating capacity not more than 30 and vessel and aircraft. ITC is not barred in case of leasing of goods other than said motor vessel and aircraft. It has been clarified. इसमें आपको कोई भी ITC barred नहीं है. Other than that, whether GST is applicable on perquisite provided by the employer to the employee as per contractual agreement. तो यहाँ पर भी एक clarify किया गया. So perquisite provided by the employer to the employee in terms of contractual agreement. There is an agreement by the between employer and employee that he will provide the certain perquisite to the employee during the course of its employment. तो अगर ये इस तरीके से कोई contractual arrangement है, तो enter into between the employer and employee will not be subject to GST. Then same are provided in terms of the contract between the employer and employee. तो किसी भी कारण से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ परक्विजिट प्रोवाइड करता है, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स कि ही विल प्रोवाइड such perquisite to him, so that in that case no GST will be leviable. Utilization of amount available in electronic credit ledger and electronic cash ledger for payment of tax and other liability. अब यहाँ पर एक सर्कुलर क्लैरिफाई किया गया. Balance available in electronic credit ledger can be used for payment of tax, whether self-assessed or in consequence of proceeding instituted under the law. यहाँ पर जो मेजर इशू आ रहा था कि जब डिपार्टमेंटल ऑडिट करता है या स्क्रूटनी करता है, वो आपको फोर्स करता है कि यू शुड पे योर टैक्स जो लायबिलिटी उन्होंने डिटरमाइन किया है
थ्रू कैश लेजर ओनली, डीआरसी के जो पेमेंट करेंगे वो कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करेंगे। नाउ इट इज वेरी वेल क्लैरिफाइड दैट कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स वेदर सेल्फ असेस, खुद भी आपने किया, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर लॉ, उसका भी पेमेंट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑल द एलिजिबल आईटीसी एज रिफ्लेक्टिंग इन योर आईटीसी क्रेडिट लेजर कैन बी इशूड, कैन बी यूज्ड और यूटिलाइज्ड for the proceeding initiated by department or the self-assessment basis under GSTR 3B. Balance available in electronic credit ledger cannot be used for, अब किस केस में नहीं यूज कर सकते हैं? फर्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स विच इज अंडर रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को कैश लेजर से ही पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। पेमेंट, मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फीस एंड अदर अमाउंट पेबल अंडर जीएसटी लॉ, इस केसेस में भी आपको आईटीसी से पेमेंट नहीं कर सकते, तो कैश से ही पेमेंट होगा। और पेमेंट ऑफ इरोनियस रिफंड सैंक्शन टू द टैक्स पेयर व्हेन सच रिफंड वाज सैंक्शन इन कैश, आपको कैश में सैंक्शन हुआ है तो उसको भी आपको कैश में ही रिफंड करना पड़ेगा, तो इस केसेस में आप क्रेडिट लेजर का यूज नहीं कर सकते। बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बी यूज फॉर, और कैश लेजर की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो कैश लेजर कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। तो मेजर जो इशू था वो क्रेडिट लेजर के बैलेंस को लेके था, और बहुत सारे केसेस में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि डिपार्टमेंट जब स्क्रूटनी या ऑडिट करता है, आपको फोर्स करता है कि आप डीआरसी 03 के थ्रू कैश लेजर के थ्रू पे करें। नाउ इट इज वेरी वेल क्लैरिफाइड that ITC valid ITC जो आपने availed किया है that can be used to pay the GST liability the GST 3B also as self assessment basis। apart from that any proceeding अगर लॉ में कोई इनिशिएट की गई है उसका भी कोई लायबिलिटी डिटरमाइन होती है, उसके पेमेंट के लिए भी उस आईटीसी क्रेडिट लेजर का आप यूज कर सकते हैं। Clarification regarding applicability of provision inserted in sub clause 2 of section 17(5)(b). It has been clarified that provision inserted in sub clause 2 3 to b of section 17(5) is applicable to entire clause b and not only clause 3। तो बेसिकली अब यहाँ पर एक नया सर्कुलर है 173, referred under inverted duty structure for outward supply under some concessional rate। अब यहाँ पर एक इशू था कि बीच में एक सर्कुलर आया था दैट इज 135/05/2020, जिसने ये प्रिस्क्राइब किया था कि अगर आपका आउटपुट और इनपुट दोनों सेम है, फॉर एग्जांपल फुटवेयर का एग्जांपल लेते हैं, टायर का एग्जांपल लेते हैं, कि टायर का जो बीच में था कि 18% टैक्स है, और लेटर ऑन जब हमने परचेस कर लिया 18% इनपुट में, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया उसको 12% कर दिया। तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर प्रीवियसली इशू किया था कि जब एक ही कम्युनिटी का गुड इनवर्ट और आउटवर्ड होता है तो उस केस में अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है तो हम रिफंड नहीं करेंगे। पहले ये सर्कुलर इशू किया गया था। नाउ गवर्नमेंट हैज सेड नाउ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर will work on this also and refund should be granted subject to conditions prescribed। तो यहाँ पर पहले ये माना जा रहा था कि सिंपल सा कि अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के रेट नोटिफिकेशन के कारण जो आपके स्टॉक का गुड्स है उसका जो जीएसटी का रेट आउटवर्ड सप्लाई में लगना है वो रिड्यूस किया गया है, तो उस केस में नहीं रिफंड मिलेगा, तो उसको क्लैरिफाई किया था उसका रिफंड मिल जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड। तो क्या था पहले, तो वाइट सर्कुलर 135/5/2020 जीएसटी डेटेड 31/3/2022, it was earlier clarified that refund on account of inverted duty structure will not be admissible in cases where the input and output supply are safe। बेसिकली यहाँ टायर इंडस्ट्री में जो उसके अंदर जो आपका उसके 18% जीएसटी का था, बाद में रिड्यूस किया गया रेट, उस केस में बहुत ज्यादा ये इशू आया। सेम कई जगह रिड्यूस किया गया, इंक्रीज किया गया तो उसमें इशू नहीं आता। बेसिकली रिडक्शन में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है जहाँ आईटीसी एक्यूमुलेट होता है, तो same which in turn result in a ambiguity with regard to refund in case of goods supplied at a lower rate under concessional notification। तो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू एक कमोडिटी का रेट को रिड्यूस किया गया तो इसका क्या रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्रीवियसली दे हैव क्लैरिफाइड रिफंड नहीं मिलेगा। now they have re-clarified and removed that notification, replaced that notification, what they say now it is clarified that intent of above clarification was not to cover those cases where supply is making supply of goods at the rate less than the rate of tax of input supply of same goods at the same point of time, and it is very disputable point what is the at the same point of time under concessional notification and thus refund shall be availed in such cases। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो परचेज आपने किया फॉर एग्जांपल 18% में किया और किसी कारण से किसी फॉर एग्जांपल 17 जुलाई आपको आपने कुछ परचेज किया 18% के रेट से, 18 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आ गया जिसने उस रेट को कर दिया रिड्यूस 12%, दैट इज कंसेशनल नोटिफिकेशन। नाउ आपका जो 6% का आईटीसी एक्यूमुलेट होगा तो क्या इसका मिलेगा, तो दे हैव इशूड, दे बी इशूड। नाउ बेसिकली जो इशू आएगा यहाँ पर व्हाट इज द सेम पॉइंट ऑफ टाइम,
फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पुराना स्टॉक है जो 6 महीने साल भर से पड़ा हुआ है आपके पास, वो आपने 18% के रेट से खरीदा था, आज उसका रेट 12% जीएसटी कर दिया गवर्नमेंट ने कंसेशन नोटिफिकेशन में, तो उसका मिलेगा कि नहीं डिस्प्यूट। और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, फर्दर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो व्हाट दे हैव सेड कि इस केस में मिलेगा प्रोवाइड द इनपुट एंड आउटपुट आर ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल एक लेते हैं कि in case of good chargeable to GST at 28% is purchased and is further supplied at the rate of 18% under concessional notification, resulting in rate of outputs being less than the rate of input, then earlier the refund for the goods will not be available pursuant to para 3.2 of circular 135/5/2020 dated 31/3/2020. However, subsequent to issue of circular 173 जो अभी issue किया गया dated 6/7/2022, it has been clarified that the refund of such goods will not be available to the supplier. So यहाँ पर now be available to the supplier. Now it is available provided there is same point of time में supply हो। तो सेम गुड्स तो ट्रेडर के केस में भी अगर परचेज जो है उसके हायर रेट में है और कंसेशनल नोटिफिकेशन के कारण अगर रेट रिड्यूस होता है और वो सप्लाई करना रहता है कंसेशनल रेट में, तो उस केसेस में आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इट इज वेरी वेलकम मूव। जनरली बेसिकली यहाँ तो गवर्नमेंट तो जिस तरीके से रेट्स रिड्यूस तो कर नहीं रही, इंक्रीज ही कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कई केसेस कई गुड्स को भी अभी नोटिफिकेशन के थ्रू इंक्रीज किया गया। इवन फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो एनोमली थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की आउटवर्ड सप्लाई की रेट कम है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो जहाँ जहाँ जिस इंडस्ट्री में ये फैक्टर आ रहा था उनको इंक्रीज करके गवर्नमेंट ऑलरेडी कोशिश कर रही है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड की प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं आए और ये एनोमली क्रिएट ही नहीं हो जहां पर आपका आईटीसी एक्यूमुलेट हो। वहां उन्होंने आउटपुट को ही इंक्रीज कर दिया है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। गवर्नमेंट ऑलरेडी एफर्ट्स ले रही है। सर्कुलर नंबर 174, रीक्राइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूजिंग फॉर्म PMT 03A। तो यहाँ पर वो था कि जहां पर आपको रिफंड आपका मालूम पड़ा कि वो एररफुली आपको रिफंड हुआ, आपसे रिकवर किया गया along with interest and penalty. Now how to recreate that ITC wrongly refunded to you, erroneously refunded to, तो उसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया फॉर्म PMT 03A। तो सेम है वहां पर। तो by inserting rule 86(4)(b), the CGST rules, the government has provided the facility of recredit in the electronic credit ledger where taxable deposit of the erroneous refund sanctioned to him. For the purpose of new functionality, form GST PMT 03A has been developed by the GSTN to allow the proper officer to recredit the amount in electronic credit ledger. तो proper officer वो उसको recredit करेगा और जो कैटेगरीज ऑफ रिफंड जिस केस में ये PMT 03A एप्लीकेबल होगा, इट इज फर्स्ट एक तो IGST के रिफंड में जहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं in the contravention of sub rule 10 of rule 96, refund of unutilized ITC on account of export of goods or services without payment of tax, refund of unutilized ITC on account of zero rated supply of goods or services to SEZ without payment of tax, or refund of unutilized ITC due to inverted structure. तो इस केसेस में कुछ erroneously रिफंड आपको हुआ है जिसको आपने रीपेमेंट किया है थ्रू कैश लेजर, तो कैश लेजर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, तो जितना भी आपने रीपेमेंट किया है थ्रू कैश लेजर वो आपको ITC क्रेडिट लेजर में चाहिए। नाउ फॉर्म प्रिस्क्राइब जो प्रॉपर ऑफिसर को रिक्रेडिट करेगा। मैनर ऑफ रिक्रेडिट, तो इसके मैनर भी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। द टैक्सपेयर शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ erroneous refund along with applicable interest and penalty form through form DRC 03 by debit of amount from electronic cash ledger। तो पहले आपको पहले erroneously refund को रिपेमेंट करेंगे along with interest and penalty। उसके बाद while the making the payment, the registered person shall clearly mention the reason for payment date, the deposit of erroneous refund of unutilized ITC or deposit of erroneously refund of IGST obtained in contravention of rule CGST rules। तो आपको क्लियरली प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा DRC में, जहां पर कमेंट आपको देना रहता है कि किस कारण से आप ये रिवर्सल कर रहे हैं। तो पेमेंट के टाइम में आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा कि किस कारण से ये पेमेंट आपका हो रहा है। Till the time is automated functionality is developed, the taxpayer shall make a written request in format prescribed in circular annexure A। आप प्रिस्क्राइब मैनुअली करेंगे जब तक GSTN पोर्टल में ये एनेबल नहीं हो जाता। एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल रिक्रेडिट द अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय पासिंग एन ऑर्डर फॉर्म GST PMT 03A preferably within the period of 30 days। Preferably, the word used here is preferably, मतलब it is not mandatory that 30 दिन के अंदर वो करना ही पड़ेगा रिक्रेडिट, लेकिन प्रिफरेबली ये कोशिश की जाएगी कि 30 दिन तक किया जा सके। From the date of receipt of request of recredit or from the date of payment of amount of erroneous refund
along with applicable interest and penalty whichever is later. तो इस तरीके से आपको रिक्राइट किया जाएगा. Circular number 175 7 2022 GST. Manner of filing refund of unutilized ITC on account of export of electricity. Basically इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट के बहुत few entities हैं जो ये एंटिटी बिजनेस में है. ज्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाते. इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हाँ, नाउ मेजर जो अभी इशू चल रहा है अक्रॉस द कंट्री, जो जीएसटी टैक्स के और जीएसटी कंसल्टेंट का पॉइंट ऑफ मैटर है, जो अराइज हुआ है ड्यू टू नोटिफिकेशन, रेट नोटिफिकेशन इशूड विच सेज दैट कि जो पहले ब्रांडेड अनब्रांडेड पे जो कैटेगरी थी कि ब्रांडेड के केस में 5% जीएसटी लगेगा, अनब्रांडेड के केस में जीएसटी नहीं लगेगा. नाउ दे हैव रिप्लेस्ड इट विद द वर्ड प्री पैक्ड एंड लेबलिंग. तो प्री पैक्ड एंड लेबलिंग जो है प्री पैकेज एंड लेबल्ड के रूप में रिप्लेस किया गया है. तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि हर जगह नोटिफिकेशन में ये प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि जहां पर प्री पैक्ड एंड लेबल्ड है उस केसेस में भी 5% लगेगा. तो हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये इशू ये था कि बहुत सारे केसेस में ये डिफरेंशिएशन हो रहा था ब्रांडेड और अनब्रांडेड, और बेसिकली ब्रांडेड और अनब्रांडेड में था कि जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. तो नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में आपको जीएसटी नहीं लग रहा था और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में 5% लग रहा था फॉर एडिबल आइटम्स. तो इस केसेस में क्या हो रहा था कि लोग डिस्करेज हो रहे थे फॉर टेकिंग द आइडेंटिटी और गुडविल के बेसिस में जो कॉपी जो भी उनका क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करते हैं. और तो गवर्नमेंट है इससे ये मार्केट में परसेप्शन बन गया था कि जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वही बेनिफिशियल है, क्योंकि उस केस में जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग कॉस्ट टू कस्टमर है वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. जो ब्रांड के केस में आते हैं, कोई रजिस्टर्ड ब्रांड के सबसे आते हैं. तो गवर्नमेंट ने इस जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा था मार्केट में उसको रिड्यूस करने के लिए अब गवर्नमेंट ने इसके परव्यू को और एनलार्ज कर दिया और इसको लिंक कर दिया लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से. अब उन्होंने कहा कि कोई भी गुड्स जो प्री पैकेज एंड लेबल्ड है उस केसेस में जीएसटी रेट लगेगा और नहीं है तो नहीं लगेगा. तो प्री पैकेज एंड लेबल्ड, तो नाउ इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न व्हाट इज प्री पैकेज एंड लेबल्ड, और दे हैव प्रिस्क्राइब्ड ये जो मीनिंग है आपके लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से ली गई है. तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द वर्ड प्री लेबल्ड, प्री पैकेज एंड लेबल्ड मीनिंग एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट. So as per section 2(1) of Legal Metrology Act 2009, pre-packaged commodity means a commodity which, without the purchaser being present, is placed in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product content there has predetermined quantity. तो पहले ही उसको कस्टमर के आने से पहले उसको प्री पैक करते हैं तो प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी के हिसाब से. तो इसको हम बोलते हैं प्री पैकेज कमोडिटी एज पर सेक्शन 2(1) ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009. उसके अलावा लेबल्ड भी और वहां पर डिफाइन किया गया है लीगल मेट्रोलॉजी में. लेबल मींस एनी रिटन मार्क्ड स्टैम्प्ड प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स टू और अपेयरिंग अपॉन एनी प्री पैकेज कमोडिटी. मतलब फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई आदमी है किसी भी फॉर एग्जांपल स्वास्तिक नाम से आप उसमें स्वास्तिक लोगो लगा दिया या स्वास्तिक वर्ड यूज कर रहा है, स्वास्तिक स्वास्तिक पोहा या कुछ इस तरीके से वर्ड यूज कर रहा है, दो इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ लेबल. तो ये भी लेबल, कोई भी ग्राफिक या वर्ड्स लिखा हुआ है जो प्रिंटेड है पैकेजिंग में, तो इट विल बी टर्म्ड एज लेबल. द प्रोविजन, बट द मेजर इशू दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई. लेकिन जो ये लीगल मेट्रोलॉजी का जो कवरेज है वो इस पे नहीं है. किस पे नहीं है तो वो डिस्कस करते हैं. दैट इज packages of commodities containing quantity of more than 25 kilo or 25 liter, cement, fertilizer and agriculture farm produce sold in bags above 50 kilogram, and पैकेज कम्युनिटी मींट फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर. तो जो बल्क पैकेजिंग होती है जहां पर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को तो या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को, तो उस फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को डिफाइन किया गया हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री. तो इससे जो बड़े कस्टमर्स है या हॉस्पिटल, तो यहाँ पर बल्क परचेजिंग होती है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, तो उसमें ये कवर नहीं करता. तो पैकेज जो ये बल्क पैकेजिंग या होलसेल पैकेजिंग जिसको हम बोलते हैं, या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है अपनी इंडस्ट्री में, डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है, तो इस केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड आउट ऑफ इट, सो बेसिकली व्हाट वी कैन कंक्लूड वी विल डिस्कस. तो बेसिकली यहाँ जो कंक्लूजन निकलता है इस डिसीजन फ्रॉम द अबव लीगल प्रोविजंस, इट कैन बी सीन दैट इफ द गुड्स आर सोल्ड in pre-packaged form, then GST 5% or 12% as per notification will be applicable on the same if the provision of the Legal Metrology Act apply to them. तो basic condition वहां पे जो prescribed है कि जो what is
pre-packaged and labeled, it is defined as defined in legal metrology act. तो अल्टीमेटली हमको ये भी देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द परव्यू ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के परव्यू से बाहर होते हैं उस केसेस में डेफिनेशन फॉलो नहीं करता, देन इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% और 12% एज द केस में भी। तो एक्ट अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 डज नॉट अप्लाई इन केसेस। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, commodities containing quantity of more than 25 kilo or 25 liter cement, fertilizer, agriculture farm food is sold in bags above 50 kilometer and packaged commodity meant for industrial consumer or institutional consumer। तो ये परव्यू से बाहर है। तो इस केसेस में आपको जीएसटी का जो एप्लीकेबिलिटी है नहीं लगेगी 5% 12% केस में, उसके अलावा बाकी केसेस में लगेगी। Thus, there will be no GST on above items if they are sold in packages exceeding the above quantity or are sold to industrial or institutional consumer as defined. So this is all from my side. So hopefully you have got all the solutions for this outcome of the 47 GST Council meeting. Now I request the host for the session, Dipti Jain ma'am, to please continue. Thank you, Vikas ji. Presentation. Yeah. Excellent presentation. I can say very well curated session you have prepared for all our participants and viewers at the YouTube channel. And you have covered very, very precisely and exactly the circulars, notifications. There are a number of circulars and notifications, and covering them and giving the gist to all the participants in just a short span of 2 hours. I think this 2 hours which you have devoted to at our platform must have taken more than 20 hours of your own study, what I can understand from your presentation. Definitely, yes, sir. It is very lots of coverage of this notification and lots of legal implication also. Yes. So a lot of things. There are few queries which we can take upon from the starting. Please, if you can go through those queries and take the relevant one, which we can take upon few queries as some time is left. And thank you all participants too for the patient hearing, and hope the session is very beneficial for you. Basically notifications की किस दिन से effective होगा ये है. Most of the notification are effective from 18 July 2022 unless there is a separate date prescribed for it. Unless there is no most of the cases में they have already prescribed कि 18 July से ये effective होगा. अगर ये नहीं mentioned है तो it will be effective from date of notification only. लेकिन वो उन्होंने कहा कि वो presentation definitely I will share the presentation with Dipti madam and he will share with all the participants. There is one issue with respect to rice mill. I think it is that the tax whether there any under tax relief on rice mill selling its goods to other. So basically अगर लीगल मेट्रोलॉजी के एक्ट के अगर कवर नहीं होता है तो उस केसेस में नहीं एप्लीकेबल होगा. तो बेसिकली यहाँ पर एक मेजर इशू है कि अगर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की रिलेवेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ब्रांडेड और अनब्रांडेड की कैटेगराइज को हटा दिया गया है. तो वॉट एवर गुड्स एंड पैकेजिंग विच इज कवर्ड अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट उसी केस में टैक्स लायबिलिटी आएगी. उसके अलावा होलसेल पैकेजेस है जो उसके परव्यू से बाहर हो रहे हैं तो उस केसेस में कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी. Is the updated 3B applicable for the month of June 2022? We have discussed with the one GST, the concerned person of GST, and they have said that it is not likely to be implemented for now onwards. Most likely it will be implemented for the July taxable period. That is, with in the period of August when you file the July return, it will be made effective. Most likely. Okay. Whether the as for GST also condition that sale of land living. बेसिकली हाँ, दिस इज द क्लैरिटी. बेसिकली रिकमेंडेशन यहाँ पर थी गवर्नमेंट की कि लैंड की जो सेल है जहाँ पर आप कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डेवलप प्लॉट्स, उस पर एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी. लेकिन यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन अवेटेड है और अभी तक के मेरे नॉलेज में ये अभी इशू नहीं हुआ है. वी शुड वेट, बट सिंस द गवर्नमेंट काउंसिल इज रिकमेंडेड, मोस्ट लाइकली इट विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली दैट इट विल नॉट बी टैक्सेबल.
will now wholesale sale of wheat, rice, etc. in a bag of 50 kg will be subject to GST as pre-packaged and labeled. बेसिकली अगर वो प्री पैकेज और प्री लेबल जो है इट इज अ टर्मिनोलॉजी एंड उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो लीगल मेट्रोलॉजी के डेफिनेशन से लिंक किया गया है नोटिफिकेशन में ही। तो अगर नोटिफिकेशन में अगर उसको लिंक किया गया है तो नोटिफिकेशन में जहां हमने डिस्कस किया कि किस केसेस में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के परव्यू से वो बाहर होते हैं, तो अगर उसके परव्यू से वो पैकेजिंग बाहर होती है इवन दो इट इज लेबल्ड, because labeled and pre-packaged as per legal metrology act we are talking about, अगर even though it is labeled but it is not covered in the legal metrology act purview के बाहर से आती है तो उस केसेस में जीएसटी नहीं लगेगा। Okay. Any other queries? There are few comments from Himali. It's a wonderful session. And Thank you so much. Swati ji, thank you so much. Wonderful deliberation by the faculty. And Rajkumar ji, thank you. He's saying that it's a wonderful session, very informative. क्वेश्चन है स्वाति सेठिया जी का क्वेश्चन है, इफ आई हैव आईटीसी अवेलेबल नाउ विलिंग टू क्लोज द कंपनी कैन आई गेट माय आईटीसी रिफंड? नो, बेसिकली आईटीसी रिफंड दो ही कैटेगरी में हो सकता है, एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स टू एसईजेड यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और सेकंड है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसके अलावा कोई भी आईटीसी कोई भी केस में आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता इवन दो यू आर क्लोजिंग योर बिजनेस। One rice mill question is there. Rice mill question is addressed. Yeah, that you can, if further clarification is required, then I request the participant please contact in personal for that. And thank you. And you can watch this session again on Gyanstation's YouTube channel. It's very much available there, and refer the complete session, refer the notifications and the clarifications issued by the government after the 47th GST Council meeting. And definitely it's a very useful session, and you will get all the crux and important points. Yes, you can take up this question, Vikas ji. Yeah. One relevant question has been raised by Aditya Bansal. As services provided by GTA by way of transport of goods carriage, goods where consideration charge for transportation of goods consignment note in a single not exceed. यस, जो आपने ये क्वेश्चन किया कि दो एग्जामिशन जो अवेलेबल है जहां पर कंसाइनमेंट वैल्यू 1500 से कम की होती है या मल्टीपल कंसाइनमेंट में और आपकी कंसाइनमेंट जो फ्लैट वैल्यू है वो 750 से कम है, दिस एग्जामिशन इज विल कंटिन्यू इन माय व्यू। तो ये एग्जामिशंस को रिमूव नहीं किया गया है, इट विल दिस विल कंटिन्यू, इट विल नॉट बी लेवल टू 5% or 12% or reverse as 5% as the case may be. This exemption will definitely continue. And then I am thankful to Gyanstation for hosting this wonderful webinar and enlightening all of us with this. You're the host, the very well planned session you have made, and will definitely, hopefully, I have deliberated my best and I have tried my best to give the best deliberation for all the participants. And we'll be looking after for more such webinars in the future also for the benefits of the taxpayers and the consultants and the industry participants across the country. And the Gyanstation is doing wonderful job for enlightening all of us of different academic, apart from taxation, Excel courses and different courses which is run by Gyanstation. It is very useful for all the taxpayers and the stakeholders. I request all the participants to go through the website and take the relevant courses offered by Gyanstation. Thank you. Thank you, Vikas ji, for such a kind words. Pragya, please continue. Yeah, thank you, Vikas ji. It's such a wonderful session you have delivered us. We have learned a lot, even many circulars, and we didn't have an idea even, in fact. So thank you so much for this session. Thank you, Deepti. Thank you, Gyanstation, for conducting these type of sessions. You have done a great job, Deepti. Thank you. And, thank you all the participants. Yeah. Yes, Vikas ji, you can thank all on behalf of all of us, because you are deliberating a wonderful session and your speech is so powerful. So good. Definitely, I'm thankful to all the participants. Hope I have justified with your time, precious time, and definitely I'll try to give more output in this platform Gyanstation as and when required. Thank you. Sure, we can plan out some more courses on GST. As we can see, there's a lot of curiosity in the market. So we'll
we'll plan a series of courses on GST enlightenment. And thank you all for joining